Okay, good morning everyone. So market how to open. Market is making a gap down opening almost 400 points on Bank Nifty और Nifty में 50 पॉइंट का गैप डाउन ओपन. Yes, yes, very good morning everyone. So gap down opening market पहले 5 मिनट मिनिमम 5-10 मिनट्स प्राइस को समझेंगे बिकॉज हाउ द प्राइसेस आर रिएक्टिंग. गैप डाउन के बाद वेदर सेलर्स आर कमिंग इन, सेलर्स आ रहे हैं फॉलो थ्रू या फिर बायर्स आर कमिंग एंड टेकिंग कंट्रोल ऑफ द प्राइस. इसको थोड़ा सा समझेंगे. ओके, देखते हैं क्या कुछ प्राइस बिहेवियर चलता है इन द मार्केट गैप डाउन के बाद. फर्स्ट 5 to 10 minutes अग्रेसिवली ट्रेडिंग रहना इट्स अगेन नो यूज बिकॉज थोड़ा सा प्राइस को स्ट्रेंथ और वीकनेस के एंगल में थोड़ा सा समझना पड़ेगा. लेट्स अंडरस्टैंड द प्राइस इन पर्सपेक्टिव ऑफ स्ट्रेंथ एंड वीकनेस. ओके. Abhi sir is asking, sir, can you show the setup that you make before market open? I mean windows and trade chart setup. It's very simple. The charts, I personally have an approach of first minimum having a plain chart looking at the price. Yes, good morning. Okay, because plain charts gives me more clarity and now generally on a gap up or a gap down while opening, the first few minutes of price where it is closing that becomes very important. Okay, first few minutes where the prices are closing, that is very important because on the lower level prices somewhere trading around the buyers. From this point prices try to move up, so now how the buyers are reacting in that same zone, that will be very crucial for the ultimate price behavior. Okay. Same applies Bank Nifty is also how the prices are closing comparing with the morning VWAP. That will be a very important role for the follow-up move of any price behavior which can develop. Okay, it's nothing much to be any aggressive just because gap down opening going aggressively on the bearish side because candles market is trying to get a small recovery on the upside में. तो इनिशियली थोड़ा सा वेट करके देखना पड़ेगा. गैप डाउन के हिसाब से ऑलवेज गैप मूव्स a slight disadvantage for an intraday trader. Okay. But definitely nothing, no plan to take any short side trade at this current stage of price behavior. Minimum, let's see for the few minutes how the candles are closing, and then we will rethink on what's the plan need to be done. What I personally will plan based on the price. Yes, good morning, very good morning, sir. Good morning, Swati ma'am, sir, Naveen sir, and sir. Okay, one thing is very clear. The first candle, which is despite gap down opening, price is clearly closing above the VWAP. Okay. So it's a direct information, direct hint. Don't be in an urgent to plan any bearish trade. Market is giving a direct hint for initial minimum for this one candle for the 5 minutes. Don't go any bearish plan. That's a clear information from the market. Yes, very good morning, Mohit sir. So let's have a close look at on the perspective of stock specific approach. I believe my screens and my voice audio is also clear enough. Just type yes for a confirmation if my audio is also fine and
See, almost all the banks have made a gap down to opening. So now very important is Bank Nifty, which is where the price is just in and around the VWAP, how the banking stocks are reacting. The way in which banking stocks are reacting, that becomes a very crucial scenario for the price to aggressively move up or move down. Okay. So far, there is no major support which is coming in from the banking stocks for the, especially on the perspective of Bank Nifty. Adani Enterprises again tagging an EPY. So as of now, there is no plan for the aggressive trades because of gap down open. Let the market settle down for the few minutes, from say 5 to 10 minutes. Okay, and then we'll be planning our trades accordingly. This session probably planning to continue the session by till 12:30 or afternoon 1 p.m. Let's see. As per the more traders participation, will be extending the session time also. Okay. The previous Deka low, right? The previous Deka low. Let me mark few visual reference levels here. Previous Deka low 7600, and on the downside there is more of a buyer's interest. Definitely no plan for any bearish side trade minimum the current stage of price behavior. Okay, one question is what is VWAP? VWAP is very simple. It's a volume weighted average price. Okay, and one more thing about the VWAP, I have already done a 3 hours of free webinar. I will try to give access to it as soon as possible. So, Vijayalakshmi ma'am, you will get an idea of it. I'll be giving access on Twitter and on the Telegram channel. And if you are not connected with us on Twitter or Telegram, you can do join the Twitter and Telegram. The link is also in the description. So as of now, price is trying to move up. Nothing to worry, no problem. But as we have no, I have no plan of any bearish short side plan on the Nifty. I just want to closely monitor the price here. Price is around trading above VWAP. Let's see, 17,600 is an previous Deka low levels. How the prices are reacting around that particular level, that will be very crucial for the further price behavior. So make sure traders to click on the like button of this live market session to support the free live market. Being straightforward statement to not even plan any bearish trade, which is market clearly shown us. We looking at the first 5 minutes of candle VWAP के ऊपर closing the clear in on the morning tick key. Don't be any aggressively on the bearish side trade. Few stock specific approach, we'll have a look at few stock specific. What's happening on Maruti? Maruti's trying to move on. Most all the stocks are trying to give a recovery, including the banking stocks. Let's see, Axis Bank will be on my watch list as of now in the current stage of price.
happening on Banknifty, flat 50, approaching the previous Deka low. Now, very important. Here, price is trying to move up. Everything is fine, but at this current juncture, around the previous day's low, how the price will be reacting is the very crucial point for any further, if possibility of getting an upside move. So far, the price is trying to move up. Fine, everything great, but follow up move will be very important for the price to continue on towards. Whereas Bank Nifty is almost flat. The option on Bank Nifty. On Nifty, the immediate important this 10-point zone will be very important. 17,600 to 17,590. This 10-point range will be very important for the bulls. How the buyers are reacting after the initial first few minutes of up move in the price. Okay, Abhi sir is asking, sir, today can we assume one-sided trending move? So we will higher the chance we can get a directional move. Okay, directional move is very clearly possible in the current stage of market. What's happening on Bharati Airtel? Srinivas is asking about Bharati Airtel. Bharati Airtel, there is a small freak activity this week which is very wide enough. It's called as freak activity in the Bharati Airtel. So until Bharati Airtel staying above 747, there is no much even thought of planning any bearish side trades on the Bharati Airtel. Okay, Rishi sir is asking, sir, can you help me in selecting stocks for intraday? Very simple, sir. Even I personally have a limited stock list which I track every day. All the heavyweight stocks on five different sectors: banking, IT, financial sectors, and few stocks like Adani Enterprises, L&T, steel sectors. In all these sectors, heavyweight stocks, that's my watch list. These are the stocks which I monitor, trade day in and day out, not more than that. What's happening on Nifty? Yes, Nifty is struggling here around the previous Deka low. Very, very important, sir. Previous day low price has to minimum trade around it or breach around it, or else there is no point in aggressively chasing. Or one good option is let the pullback come from the VWAP. If there is any rejection, that will be one round of better opportunity on the bullish side. If price is trying to reject हो रही है previous day low के आसपास, तो VWAP प्राइस अप्रोच कर रहा है वहां से एक रिजेक्शन मिल रहा है, that will be a better risk to reward opportunity. Okay. We are closely looking at IT stocks. IT stocks are two stocks are trading inside yesterday's range above the previous day's low. We are looking TCS quickly for the Nifty. TCS is clearly trying to trade above the previous data low. So now it's very important on TCS. If there any their price is trying to give a small pullback, if there is any rejection from this point, that will make me to plan a bullish opportunity on TCS. And Nifty feeling the pressure clearly from the higher levels. There is a clear cut pressure, and also Nifty is scenario is also same. Nifty is trying to come back to Viva very easy. Bank Nifty higher levels, there is a clear cut pressure from the higher levels on Bank Nifty. Let's see, because Bank Nifty has not even approached the previous day ka low, whereas Nifty has made an attempt. Stock specific, index specific questions, you can post your questions in the chat box. Meanwhile, let's see how the prices are behaving. As it is a gap down का momentum, it's an always a disadvantage for an intraday trader. कि gap और gap move में कभी भी disadvantage है intraday trader के लिए.
देखते हैं कि क्या कुछ प्राइस बिहेवियर चलता है. Traders, make sure to hit on the like button by for supporting this live stream. Axis Bank feeling the pressure. TCS is trying to move down. IT stocks will play a very important role for today's Nifty ka momentum. Nifty's momentum, IT stocks will play a very important role. Is back to VWAP. Okay. So any at this current stage of market very important कि यहाँ से प्राइस बुल्स और बायर्स जो भी मॉर्निंग आने की कोशिश कर रहे हैं वो कितने स्ट्रॉन्ग है अभी आइडेंटिफाई हो जाएगा. If price is getting a rejection from this VWAP, then we will get a clear idea कि there is buyers are trying to come into the picture. Somehow auto stocks are still sticking above the gap. The bank nifty go just looking at this one red color candle. If you ask me, I'll be going any aggressive bearish side trade 101%. No, because looking at candle color and executing trade is just of the wrong way of trading. I just first need to check where is the price. The price is somewhere trading here in this consolidation zone. Price is trade and lower level. There are buyers can come for a different. See how the TCS reacts. Always the gap down और gap up opening है तो बस 10 मिनट आराम से अग्रेसिव बढ़ने की कोई फायदा नहीं है. ना कोई वॉल्यूम भी अग्रेसिवली इट्स नॉट कमिंग इन कि यू कैन जस्ट गो जंप एंड एक्सिक्यूट. Here even in terms of comparing Nifty and Bank Nifty, Nifty is still above VWAP. Bank Nifty आराम से VWAP के नीचे ट्रेडिंग ऑप्शन चल रहा है. Any good sign of rejection from this point, I'll be using this as an opportunity to plan my bullish trade on Nifty. Okay. Nifty, I'll be having few things on my watch list on the options. Like first, I'll be having 17,550 ka call option in my watch list. Future, if you are into future trading, I'll be better to have a future your watch list. In terms of directional option selling, same 17,550 ka on a reverse side. The options to have in the in terms of the Maruti, the way price is getting a respect without any candle even closing below the, yeah.
Maruti looking bullish for me above 886 levels. Okay, Maruti looking bullish for me above 8860 levels. The way price is trading here, despite the sellers making an attempt on the first candle पे, उसके बाद ये attempt इसमें अभी तक कोई aggressively price react नहीं हुआ है. From here on the bank Nifty, first question comes into picture is this. ये जो buyers है, what they are planning on this lower level, ये जो overlapping condition है, what is the price behavior which can come into. दोनों level will be very important. First need to check how the buyers are reacting. So one question is Nifty getting rejection from previous day. Still, price is not clearly closing below the VWAP. He's trying to take a rejection. Yes, that's an approach, but the price clearly trying to close below VWAP. That's a question mark which is laid out on the peak. Okay, still price is above VWAP only. Can't confirm it as a clear cut rejection previous days. Low on Nifty. Because one or two candle, some aggressive green or red candle color don't get influenced by the candle colors and all. And here Kotak Bank, trying to track Kotak Bank, this is around saying one candle itself. Having a look at the Kotak Bank price. The price is slightly for only aggression. Yeah. Kotak Bank also I'll be having in the watch list because if the lower level sellers fail, trying to come in the sellers, if they are failing, then it's game on. Look at this Bank Nifty. Way in which the speed in which the aggression in which price is reversing back. Okay, just because the low is breaching, those are trading short side trade, they are already in the pressure. Price back to VWAP. 120, 120, 130 points shooted up from the pre-morning low. Those are so much aggressively looking at sir 15-minute ka low is breaching. Go and short side trade in just 5 minutes. They are under pressure. Now Nifty looking. Look at Nifty the way its price is behaving. How the Kotak Bank will play an one more important role. Bank Nifty aram se getting a clear cut rejection from the lower levels. See what's the picture on the Nifty. Okay, above this candlelight, Nifty is looking bullish, but I'll be giving a buffer. 17607 is the high means. I'll be entering above 17613 levels. Price breaching 17613 levels. I'll be taking my bullish trade on the Nifty. Okay, 17613 price is breaching. I'll be taking my bullish trade on the Nifty. Okay, the first trade which has been planned here is price breaching above this candle high. I'm giving a 5 points buffer. 17613. If price breaching 17613, I'll be taking my bullish trade on the Nifty. Kotak Bank is doing. Let me mark this level also. The level above which I'll be planning my bullish trade on the, yeah, price is reaching on
On the option buying perspective, it's we having 17,550 ka call option in my watch list. Aram say future perspective is fine. Yes, how to plan in future option if not in future? Very simple. 17,550 ka candle. Just open the 17,550 ka call option. Just check what is this candle eye. The mark the candle eye on the 500 time frame. What is the candle eye? In future, I have given 5 points buffer. Means in option you can give 2.5 point buffer. That is above somewhere around the 17,117.50 on the option. Okay, simple. Yes. Oh, this one candle. What is this time of the candle? Just I will be opening 17,550 ka call option. What is the eye of the candle in that option? It is double one five. So I have given 5 points buffer here. So in that 17,550 call option, I'll be giving 2.5 point of buffer and executing my trade placed. The Bank Nifty SL very simple, sir. Few points below this will be my SL. Okay, we're giving a buffer here. That will be my SL. Bank Nifty, what's happening? Bank Nifty is trying to roam around, give up. Yes, I'm still wait on Bank Nifty. As of now, Bank Nifty is not aggressive mainly because banking stocks are not in aggressive to move up. देखते हैं कि are we getting any trades? Yes, Bank Nifty is slightly in an one good question from Venkat sir is Bank Nifty surrounding around VWAP. Can we say it is confusing? The Bank Nifty still let the price trade minimum if it is want to overlap it will be minimum 20-30 minutes. उसके बाद we can confirm here it is a confusion. As of now बिल्कुल confusion नहीं है. Price is clearly trading above or clearly trading below. Still it is not in any kind of confusion. Bank Nifty में फिलहाल के लिए निफ्टी में देखते हैं प्राइस 17,613 को ब्रीच कर रहा है तो आई बी प्लानिंग माय बुलिश ट्रेड फिलहाल के लिए प्राइस प्रीवियस डे लो के आसपास ट्रेडिंग चल रहा है सेलर्स आर मेकिंग फॉर अटेम्प्ट मेक करने की कोशिश कर रहे हैं हाउ स्ट्रांग और हाउ दे आर वीकर अभी थोड़ी देर में समझ आ जाएगा लेट्स सी मेन picture will be more into the two banking stocks Axis Bank and Kotak Bank where these two banks are reacting to एक broader picture clear cut मिल जाएगा देखते हैं गैप डाउन ओपनिंग के बाद सेलर्स हैविंग सो मच टाइम फिलहाल के लिए वो कोई अग्रेसिवली प्राइस को नीचे ले जाने में कुछ ज़्यादा कुछ नहीं दिख रहा है देखते हैं वेदर आर माय बुलिश ट्रेड्स ऑर्डर्स आर गेटिंग और नॉट there's nothing much urgent we have a plan I have placed my orders so let's see because it's very obvious around previous day का लो reference level sellers will try to come in कितने strong है और weak है अभी थोड़ी देर में समझ आ जाएगा if price ready to close below VWAP. Price is again trying to get a rejection from the previous day's low. If it is struggling to close below VWAP, so automatically buyers will take the price more control. के लिए banking stock की support is very important because even IT stocks are pretty flat. So support के लिए for the Nifty banking stock support be one of the crucial factors. Let's see देखते हैं what happens. We are getting their support.
Okay, one question from Abhay sir, when trade initiate in Nifty options? Simple sir, 17,550 ka call option. If it is breaching the level of 7117.50, I'll be executing my orders on the option perspective. Okay. One more thing which we should not ignore, that is the stock which is trading around the 52-week high. One such stock is Adani Enterprises, is Aram se without any pressure, Aram se trading above the 52-week high, above the previous day's high, without any, it's Aram se trading above. Then what happens on the Nifty? Here from this point, if price is giving any momentum on the Nifty, who should be faster? That is where it will panic those morning gap down. They kept जो भी short कर रहे हैं Nifty को, they will be under pressure straight away. Okay, let's see what happens. Here 2 more minutes is left for the candle to close. Bank Nifty trying to take some time more above the VWAP. That's a good sign. देखते हैं what's the scenario. All the time it's spending below this on previous day ka low, nothing much to be in a stage of confusion. It's aram say it's obvious. The price around the previous day's low, there will be obviously sellers participations will be there because it's a reference level, right? That is the reason I marked those levels as it is a visual reference level. देखते हैं. Bank, yes, Axis Bank is supporting, trying to recover back on the upside. Kotak Bank below VWAP, aram se Bank Nifty trying to settle out. How the VWAP. Now, if I want to understand what retailers are doing, I'll be adding volumes. Volumes यहाँ पे ऐड करूंगा retailers की प्राइस को समझने में. अब एक चीज नोटिस करो यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट है, जो भी सेलर्स आने की कोशिश कर रहे हैं, जस्ट आई बी कंपेयरिंग दिस वॉल्यूम विद दिस वॉल्यूम. Okay, because this was the first attempt, this was the second attempt. The sellers volumes are dropping down, right? तो मैं यहाँ पे क्यों बायर्स वॉल्यूम ज्यादा फोकस क्यों नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज प्राइस इज ऑलरेडी इन द जोन वेयर द बायर्स हैव ऑलरेडी टू कंट्रोल, इसीलिए मैं उनके वॉल्यूम में ज्यादा फोकस नहीं कर रहा हूँ, सेलर्स की वॉल्यूम में थोड़ा फोकस ज्यादा है. मैं देखते हैं व्हाट हैपेंस वेदर द ऑर्डर गेट्स एग्जीक्यूटेड ऑन द बुलिश. What Kotak Bank is doing is the Kotak Bank support बैंक, इस बैंक से थोड़ा सा एक सपोर्ट मिल रहा है. बैंक निफ्टी आराम से staying above VWAP, that itself is more fine enough. Okay, one question is why Nifty 17,550 for call options are very simple. I choose strike prices of option if I'm trading on the option buying side.
I choose one strike price minimum away from the ATM. One strike price minimum away from the ATM. Even the spot is trading around 17,586, 80, 17,590 ka levels. So ATM becomes 17,600. One strike price lower from the ATM for the call option. A slight in the money. That is the reason I'm choosing 17,550 the call option. And one thing is sellers are trying to come in, but उनके volumes इतना कोई खास नहीं है. Prices आराम से staying above VWAP. Only thing is this previous day का low. How the price is reacting here, that will decide whether the price is ready for the upside or it is more ready for just an overlapping. थोड़ी देर में समझ आ जाए. Okay, traders, make sure support the live market session by clicking on the like button. More the like button, I can understand more you are supporting this live session. Okay, let's wait for the order whether it's getting executed or not. In terms of this total, is trying to again come up to sign. What's Stephen is asking Apollo tires ka view. So what's your time frame? Intraday positional swing. Let me know the time frame. Wanting to ask any view. Stephen sir, what's your time frame? Are you an intraday positional swing? What's your expectation on the Apollo tires? Shubham sir is asking, telling thanks sir for this initiative. It's really helping a lot. Thank you so much. You traders are joining this live stream. Without you, this live stream is again will not benefit more. More traders joining, it can reach more traders even on the YouTube platform and it can benefit more. That's a simple process. Okay, more and more the volumes are dropping down from the previous day high के आसपास जब प्राइस जा रहा है जितना जितना ज्यादा वॉल्यूम ड्रॉप हो रहा है सेलर्स के थ्रू उतना ही क्लियर कट अप्रोच है कि अग्रेसिव अपसाइड की चांसेस बढ़ रहा है. चांसेस आर गेटिंग ओपन फॉर देन अपसाइड. तो देखते हैं पहले at the whether price is clearly closing above this previous day ka low, this level 17,600 ka level. Okay, first of all that's very important sir. Axis and Kotak Bank, this two bank has to support कहीं ना कहीं, because if you are looking broadly IT stocks में focus करेंगे तो IT stocks VWAP के ऊपर खड़ा है, just staying above VWAP. few IT stocks, two IT stocks TCS and Infosys staying above VWAP के ऊपर और HCL Tech और Tech Mahindra VWAP के नीचे है. मतलब क्लियर कट कंफ्यूजन आईटी से अभी फिलहाल के लिए कोई ज्यादा सपोर्ट नहीं मिल रहा है निफ्टी. नेक्स्ट क्लोजली लुकिंग एट द सेक्टर विल बी बैंकिंग सेक्टर. बैंकिंग सेक्टर सपोर्ट करना शुरू कर देंगे तो इसके बाद की सपोर्ट की जरूरत ज्यादा नहीं पड़ेगी फॉर द प्राइस टू योर डायरेक्शन. पर क्लोजली चेक करते हैं कि व्हाट रिलायंस इज डूइंग बिकॉज़ रिलायंस इज द मोस्ट हेवीवेट स्टॉक ऑन द निफ्टी. रिलायंस की एक बार प्राइस चेक करते हैं कि क्या कुछ बिहेवियर चल रहा है रिलायंस पे. रिलायंस तो आराम से विवाद के ऊपर ट्रेडिंग, ना कोई प्रॉब्लम बिना कोई इशू. Okay, Apollo Tire, Stephen says question is on Apollo Tire for September month, entire month, so that is kind of a swing. देखते हैं orders are, I have placed my orders, whether the orders are getting executed or not. Okay, Apollo Tire आराम से trading around the 52 week highs है. So it's a clear picture here on the Apollo Tire even for the entire September month until price is staying above 256 levels. It's a bullish or minimum. If you are looking at very close level, if price is more staying above 268 until there is no clear close below 268 on a daily time frame, Apollo Tire aram se bullish because it is trading around the 52 week high. What's happening on Nifty? Nifty is again trying to come back to VWAP. फिलहाल के लिए order execute हुआ है, देखते हैं. Again price trying to come back to VWAP.
बैंक निफ्टी का क्या बिहेवियर है प्राइस में? बैंक निफ्टी आप देख पा रहे हो सर, ये ओवरलैप दिख रहा है, 2 3 4 6th कैंडल है. We are looking at the bank nifty, almost all the candles so far have minimum touched VWAP one time. तो ये थोड़ा सा पॉज मोड में है बैंक निफ्टी फिलहाल के लिए, ना पॉज मोड, बिकॉज ऑलमोस्ट ऑल द कैंडल्स आर ट्राइंग टू टच VWAP minimum one time. अभी तो candles are getting more narrow here. Fine. Let's see what's in Nifty. Nifty I am bullish above 17,630 for future levels. देखते हैं. On the option side, I have chosen 17,550 का call option. On the option buying perspective, bullish above 117.50. Then Kotak Bank is again trying to get a control on the Kotak Bank. देखते हैं. And also very important to check is the what Adani Enterprises, because that stock can't ignore it, because it's clearly trading above the 52-week high levels. Axis Bank is slowly trying to take control of the price. There is Nifty, and तो हो जाए विवाद के ऊपर आराम से ट्रेडिंग हो. Kotak Bank, let's see. Kotak Bank, the way it's crossing the 1900 mark and higher level, that will be very important. Let's see Kotak Bank. This is the free high. This is not the real high which is being formed. It's a free high on the Kotak Bank. Bank Nifty. One thing is clear: those who morning trap is done below this morning low, the trap is done here, and those traders who are just looking at the 15-minute breakout and blindly taking a short side trade, they are already under pressure. They are already facing an 100 points loss on the bank nifty. Those who are entering on the 15-minute का breakout scenario without looking at where is the price, कौन से zone पे price खड़ा है फिलहाल भी. एक्सिस बैंक सपोर्ट करने की कोशिश है, वेरी इंपॉर्टेंट है. कोटक बैंक जो भी नैरो रेंज फॉर्मेशन बन रहा है फिलहाल के लिए, कोटक बैंक से सपोर्ट मिलना इट्स लाइक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. Even if we are looking at any other stocks, IndusInd Bank, a stock like IndusInd Bank, which also gives a small contribution, बैंक निफ्टी में कंट्रीब्यूट करता है IndusInd बैंक भी. Even here IndusInd Bank, small down move on the morning, immediately price reject करने की कोशिश था IndusInd Bank में भी. Clearly IndusInd Bank is looking bullish above 1096 का levels. Okay, IndusInd Bank looking bullish clearly for me above 10 का levels. So there is one good contributor. If the price is firm, that will be contributor. Nifty is bank. So far, two orders I'll be more comfortable in placing, and I have placed it. That is on the Nifty bullish above 17,613 ka levels, and on the IndusInd Bank above 1096 ka levels.
देखते हैं व्हाट हैपेंस सो फार। वॉल्यूम्स और भी ड्रॉप हो रही है, जिस यहाँ पे हम सेलर्स की वॉल्यूम पे ज्यादा फोकस, बस प्रीवियस डे लो के नीचे जो भी अटेम्प्ट हो रहा है, वीवा प्राइस वीवा के ऊपर है, तो focus will be more on the selling side, what the sellers are doing. कहीं ना कहीं sellers एक चीज तो क्लियर है, जस्ट कंपेयर दिस वॉल्यूम्स, देख पा रहे हो द वॉल्यूम्स आर गेटिंग ड्रॉप फ्रॉम द मल्टीपल अटेम्प्ट फ्रॉम द सेलर। वन मोर गुड साइन, देखते हैं whether now the momentum is coming, that's important। यहाँ पे देख रहे हैं चार्ट को, देख रहे हैं समझ रहे हैं सेलर, but the movement, ultimate movement is also the big important role। Here the one stock as I was mainly morning from morning focus can't be ignored, that is Adani Enterprises। So Nifty fine, then on the Adani in a bullish scenario, price reaching 3471 ka levels, I'll be bullish on the Adani। So far three plans I have, one is also now Kotak Bank is trying to pick up। Now very importantly, candle कैसा close हो रहा है sir, all the heavyweight stocks are giving a sign of bullishness only, how these candles are closing, that will be very important। Adani Enterprises looking bullish above 3471 ka levels, okay, with a stop loss of 3450, that will be my trade plan on Adani Enterprises। Parallelly Nifty, the first clear close above the previous day का low मिल जाएगा, उसके बाद की momentum very easy to capture। Again Kotak Bank is trying to pick up again, that's a one more good sign which we are getting here। Yes, I'm focusing on Nifty on the option side, sir. Option side, I'm focusing on Nifty. I've already mentioned 17,550 ka call option। Okay. when ये कोटक बैंक ये कैंडल का क्लोज वेरी क्रूशियल रहेगा sir। 90, कोटक बैंक also I'll be adding 1900 का call option in my watch list। कोटक बैंक also I'll be adding 1900 का call option my watch list। Yes, कोटक बैंक 1900 का call option I'll be focusing for me is bullish above key levels। The Kotak Bank plan as of now in the current stage of market, because kahin na kahin the price is clearly trying to approach or in the spot price above 1924 ka levels। See, various stocks on various sector is showcasing us on the one direction, that is bullish as of now in current stage of market। The way Bank Nifty is behaving, the way Nifty is trying to behave,
already orders are placed waiting for the trigger to come in. Kotak Bank option 1900 call option above 60 levels, more comfortably bullish for me, or in the spot levels above 1904. Okay, happening in the questions are put सकते हो on the chat box. Okay, I will be placing I will doing option buying as of now, sir. Okay, because there are multiple trades coming in. It's better यहाँ पे morning भी aggressive कोई premium DK नहीं मिल रहा है. This is the reason I am focusing on option buying only. Premium DK का problem ज़्यादा कुछ नहीं मिल रहा है in terms of the broader market on the option buying perspective. Yes, I am putting trigger orders in option by calculating. Yes, sir. Very simple, sir. Let's say if I want to plan a bullish trade on the Kotak Bank, what is this candle? I'll be checking on the option strike price. What is this candle? As I'm entering with giving 2 points of buffer, similarly, I'll be giving 1 point of buffer in the option. Simple. Way it is more, it is getting narrower, more the expansion is possible. Take care. Are we getting an aggressive expansion or not? Okay, one question is make sure traders hit on the like button of this live market session if you find the session useful by supporting this live stream, because more the likes it can benefit more traders on the YouTube platform also. Okay, Balram sir is asking Ultratech cement in option. Ultratech still Adani enters trades have not got triggered. Ultratech, what's the behavior here? The Ultratech cement already moves done sir. From morning it's just only clearly moving up. The move is almost done. No point in chasing this Ultratech cement, Balram. Okay, similarly ACC again the moves aggressive moves done. Now we have to wait for a small pause and then react. Meanwhile, let's go come back and focus on the Nifty. What's this? We're getting a trade executed or not? The speed is very important, and the speed in which prices move that will be more support. Till Kotak Bank, what's happening? Okay, ACC the morning aggression moves done, sir. Almost 100 point ka move 5%, 4.5 5% ka moves there is done. Now after 5% chasing means we have to wait and then we have to react, sir. Aggressively reacting. I don't think it will be a good sign of will be become in a scenario आप प्राइस चेस करना सिनेरियो जाएगा बिल्कुल. आई एम नॉट रेडी टू चेस द मार्केट प्राइस. देखते हैं बैंक निफ्टी निफ्टी टाइम ले रहा है, कोटक बैंक भी टाइम ले रहा है. देखता नहीं. 43471 ओनली अभी रीच नहीं हुआ अदानी में. in one more attempt price is fine now. Okay. Just we will have a close look. Is there any premium DK which is getting developed at the current stage? Yes, there is mild premium DK on the option of hardly 1 point, 1.5 point for premium DK.
That's acceptable. Not a big deal. That's an acceptable case of scenario. Yes, good morning, good morning. I said sorry for joining you. Problems. Let's see. Bank Nifty, whether it is crossing 17613 for a bullish trade. Kotak Bank, whether it is crossing 1904 or on the options of 1900, whether it is crossing levels. Okay, how to look premium DK? Very good question. I will show you how to look premium. You have to compare the charts, get an understanding of how the premium decay happens. And I will show you. Parallelly, I'll be opening a future wala chart on the this one Nifty along with the option. Very good question, Vijayalakshmi ma'am, regarding the option DK, how it is happening. So we were focusing on Nifty, right? So I will be chart on one side or Nifty ka 17,550 ka call option chart on the other. Then can you? I believe you can see this chart, see being in front of you. Okay. So here, how to identify the DK? Very simple. When morning price was at this point, this was the candle. The option tag new day along with the Nifty. And this is on the right side is the option chart. On the left side is the future chart. Already, I think on the Twitter, I have already shared how to look the option DK, but still, I will be explaining you again here. Okay. This was the first time Nifty made an eye here. Option also made an eye. Second time when Nifty made an eye on the same candle, option there was the from this point it's more than 1.11 to 2 points was different. There was no eye made here. Third time when there was one more eye made in the future, here price is not even crossed this level also. Can you see this small decay on the premiums from year to year to year? This small decay on the premiums, right? So this is what called as decay. This is the decay. This could be seen 2 to 3 points decay, which is clearly visible on the current stage of Nifty. It's just one of the simple way. Again, there are various both side ways is there to see the decay, but yeah, one of the simplest way there. Okay. Actually, I have shared already on the Twitter platform also about this. वापस बैंक निफ्टी स्ट्रगल कर रहा है आई को ब्रीच करने में प्रीवियस डे आई के ऊपर ट्रेड करने में तो यार अगेन द क्वेश्चन मार्क इज सेम अंटिल वीवैप के नीचे प्राइस ट्रेड नहीं कर रहा था आई एम नॉट एनी प्लान टू बियरिश ट्रेड ओनली प्लान हियर इज टू फोकस ऑन द बुलिश ट्रेड ऑन द निफ्टी at the current stage of price. Price overlap कर रहा है, nothing much to in stage of problem or worry. ओवरलैप कर रहा है तो करने दो, यहाँ से बिल्कुल भी अर्जन करने से मुझे नहीं लग रहा कुछ बेनिफिट हमको मिलने वाला है। अच्छा प्राइस जब तक वीगा के ऊपर है, आई बी स्टेइंग ऑन बुलिश साइड ओनली। कोटक फिलहाल के लिए ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। So now there are one more possibilities if price again trying to move up. At this juncture, there is a possibility वहाँ पे premium जो भी decay हुआ है that can get adjusted. तो adjust हो रहा है कि नहीं that will be also checking that as the price if it is approaching. Okay. चीज को भी हम चेक करेंगे. So far the plans are ready. देखते हैं कि how good the orders are getting executed or not.
क्वेश्चंस क्वेरी है तो आप चैट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हो। फिलहाल के लिए आई एम वेटिंग फॉर द ट्रेड्स टू गेट एक्सिक्यूटेड। लेट्स सी whether we are getting a trade or not. Same on the and same on is also scenarios and Nifty. Because so far whatever volumes are coming, which is trying to push the price down, I don't see any aggressive volumes pumping in volumes. It's like very dried out volume. तो जब तक वॉल्यूम इतना कोई खास ड्राइड आउट वॉल्यूम है, nothing much to even more overthinking here in the current stage of price. यहाँ से ओवरथिंक करने से कुछ बेनिफिट मिलेगा तो कुछ बेनिफिट तो नहीं मिलने वाला है। Stay far better to not much overthink. And levels ready है but trade अभी तक execute नहीं है। We are waiting for the trade execute. Akis is asking how to find price and time action. So it's not about finding anything. We have to experience. We have to experience it. Not a 1 day, 2 day ka job. It's like a everyday work. Understanding the time and price in which any stock or market is being moving. Big stage of process. वापस वीवा पाने की कोशिश कर रहा है ना, and stage of overthinking. What in the stage of overthinking? Are in clear in front of me. Sorry, waiting for any such execution which can give me reward. Happening on total bank. Okay, Rishi sir is asking, sir, do you place orders in advance or you wait for the levels near your price or goes and then place order? No, sir, I place my orders in form of a stop loss trigger order. Place it in advance itself once my levels are clear. Because I'm waiting for the levels, and if the moves faster, definitely I will miss the trade or I will face an issue of slippage. It will be high. इस हिसाब से I in advance place order form of a stop loss trigger order. बैंक निफ्टी भी बिल्कुल भी कोई इसका मूड में नहीं है कि it can आराम से छोड़ देगा। बैंक निफ्टी is also trying to come up. One more sign of almost in this current stage nothing is looking any bearishness नहीं है। सारे विभाग के ऊपर आराम से ट्रेडिंग हो रहा है। देखते हैं कि व्हाट इज द रियल सिनेरियो। कोटक बैंक्स माई ऑर्डर्स टू ट्रिगर में सेम सिनेरियो वेट कर रहे हैं ऑर्डर ट्रिगर होने। फिरोज सर इज आस्किंग, सर इन बिड एंड आस्क क्वांटिटी, sir is bid and ask price quantity matters, as in nifty future bid quantity is above 5 lakh and ask quantity is only 2 lakh. No sir, I don't think that bid and ask quantity will play an important role. Any information it will give for our trade execution, I don't think it's giving any information like that. Even I have tried monitoring it but मुझे इसमें से कोई ज़्यादा benefit नहीं मिला सर। ज़्यादा कुछ benefit aggressively नहीं मिला तो मैं ज़्यादा चीज़ के लिए कोटक are we getting a trade?
तो बैंक निफ्टी का प्रीवियस डे का लो भी एक बार मार्क कर लेते हैं। अगेन ट्राइंग टू कम अप। कोटक बैंक हिसाब से बैंक निफ्टी की प्राइस चल रहा है। बैंक निफ्टी is also more into comfortable being above the VWAP. Adani S3471 का level के ऊपर I will be bullish on the Adani. The levels I have already updated for what's my trade plan on our Nifty. We are waiting for the order to execute from morning. यहाँ पे फिलहाल के लिए भी जो भी सेलर्स आ रहे हैं ट्राइंग टू कम इन अराउंड द प्रीवियस डे का लो। जब तक वो वीवैप के नीचे प्राइस ट्रेड करने में कंफर्टेबल नहीं रहते हैं दैट इज टिल दैट पॉइंट में आराम से आई विल बी स्टेइंग बुलिश ओनली। बेरिशनेस की कोई अग्रेसिव प्लान नहीं। Okay, one good question from Abhay says, what will be the stop loss for Nifty 17550 call option if we enter once it cross 117? Loss will be, I think it will be around 20-25 points. Oh, and one more thing we need to check. Yes, stop loss will be 90 levels. Still the orders are bending. देखते हैं कि क्या कुछ हो रहा है। उदय सिंह सर क्वेश्चन है सर अगर निफ्टी का ऑर्डर ट्रिगर होता है तो टारगेट क्या होगा? एक क्वेश्चन। टारगेट रहेगा मिनिमम एनीथिंग अबव 680 टू 700 का लेवल्स will be my minimum target. I'll be focusing if the Nifty का order gets वापस one more attempt from sellers. स्ट्रॉन्ग और वीक अभी समझ आ जाएगा। दिस मॉर्निंग लो यहाँ से लो कौन सा शिफ्टिंग हायर वापस एक अटेम्प्ट एट द सेम जोन। ये रिजेक्ट कर रहा है या वीवैप के नीचे क्लोज हो रहा है दैट विल गिव द कंफर्मेशन कि बुलिश ट्रेड में बने रहते हैं टिल द ऑर्डर्स कैन बी प्लेस्ड और टू बी रिमूव। ये पिक्चर थोड़ी देर में समझ आ जाए। फिलहाल के लिए साइडवेज की ऑप्शन ज्यादा हो रही है। आईटी स्टॉक्स क्लियरली बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहा है निफ्टी को। आईटी स्टॉक्स HCL टेक एंड टेक महिंद्रा आराम से ट्राइंग टू कम डाउन। कोई aggressive support from the IT stocks is not visible. One question is कोई ट्रेड लिया अभी तक आपने प्लीज सर? सर अभी तक there is no momentum happening, the orders are placed
I have already mentioned on the Nifty and on the Kotak Bank. Both the orders are placed, waiting for it get to executed. Okay, वैसे भी अभी तक तो कोई momentum ही नहीं आया. Waiting for the orders to place. Let's see. Anand sir is asking, sir, do you trial the SL or what is your plan? Let's see, sir. Based on the price move, सब decide रहेगा. Okay, price move के हिसाब से सब कुछ decide रहेगा. Arjun sir is asking if you manually place the C5 order and then a sudden spike comes, candle goes in opposite direction, won't the trade go and loss from the start itself? Sir, it's again depend on the market, sir. Okay. We are only looking for a spike scenario. Spike scenario doesn't come every time. Okay, spike scenario आ रहा है तो it's a natural habit which has to be accepted. हम उसको neglect नहीं कर सकते. Okay. Arjun sir, same thing. Think in this perspective. I want to execute above this on the option probably above 117 ka levels. Let's say price by the time waiting to cross straight away shoot up kar diya, you will be not getting any trade, right? If you are not getting any trade, that also in that order in that case also. Okay, one good question from Intul sir is gap down outside previous days range at what point in time we can decide this is going to be a sideways day? What point time we can decide is if price started more than 30-40 minutes roaming around Viva or multiple time coming and tagging and roaming like this around Viva, then we can consider there is a probability of sideways. But as it is outside the range, I still think there might be a momentum which can take place. Kotak Bank price is trying to move, option is trying to move faster than the spot, so I'll be on the 1060. I'll be moving the order to 61 rupees. Above 61 looking bullish because options are moving slight faster compared to the spot. Okay, Kotak Bank on the option side bullish above 61 on the spot levels 1094. He is trying to again come up one good sign. Is there any premium DK? If there is any premium DK, there might be a requirement to shift the order price like on the downs. Let's see. Understand is there any premium DK? User is asking where can we initiate aggressive short, struggling to close above previous day ka low or failing. The aggressive short side or any bearish plan at the current stage of market, price has to trade below VWAP से. जब तक VWAP के नीचे ट्रेड नहीं कर रहा है, no plan for short side trade. Arjun says one more question, sir. Now when market has gone sideways for some time and some theta decay happens, do you change the order price? How do you shift it? Let's see, sir. That is what I'm closely looking. Premium decay is there, obviously is there. Okay. Initial plan was to go above 117 ka levels. Let's see if the price is crossing the zone about trying to go above the previous day ka low price, then I'll be checking again ki is there any decay. If there is any decay, I'll be shifting the price of my entry 1 point or 2 point lower. That's how I'll be shifting the price after looking at the decay. Still Kotak Bank's orders are bending. Yes, in bank money is still struggling. देखते हैं. One question is in my chart price showing near previous day, but in your chart near Viva. So just I think you are not connected on live, sir. Okay, just click on the video. You will see the live option. If it should be in a red color sign, the live should be in a red color sign, or else you have joined. You are in a delay because of your internet. You can check that, or you can rejoin again if there is any price change from my chart to your chart, and also check whether you have added Nifty future ka chart also.
Can Adani Enterprises give breakout? Yes, Adani Enterprises above 3471. I am already I have mentioned I am bullish on Adani Enterprises above 3471 ka levels. Adani Enterprises from morning the levels are ready for me above 3471 ka levels for a bullish scenario trade to play out. ऑर्डर्स प्लेस है, लेवल्स मार्क है, जोन क्लियर है, कब इसे एग्जीक्यूट करना, फिर भी अब हम क्या वेट कर रहे हैं ऑर्डर्स एग्जीक्यूट होने के लिए. पार्ट ऑफ द गेम, नॉट अबाउट ट्रेड आने से वेट करना, ट्रेड ऑर्डर एग्जीक्यूट, ऑर्डर्स यू हैव प्लेस्ड टिल यू हैव टू वेट फॉर द ऑर्डर्स एग्जीक्यूशन के लिए भी वेट करना पड़ेगा. तो ट्रेडर्स मेक श्योर टू click on the subscribe button if you have not clicked on the subscribe button. Turn on the bell icon to get notifications because this live market session will continue on all trading sessions. From now, all trading day morning is the live market session will be going on. Make sure to support this live market session by clicking on the like button of this live market. Bank, we are waiting for the trade. Nifty waiting for the trade. This bank also 1096 above 1096. This bank is also looking bullish for the trade. Adani above 3471 levels. In bullish. Again waiting for the trade. Any questions you have, you can ask your questions in the chat box. So as of now हम सिर्फ वेट कर रहे हैं ऑर्डर एग्जीक्यूट होने के लिए. निफ्टी में, कोटक बैंक में, अदानी एंटरप्राइजेस फिलहाल के लिए थोड़ा दूर है प्राइस और इन्वेस्टमेंट टाइम में. बैंक निफ्टी जिस हिसाब से ये जो ओवरलैपिंग सॉरी जिस हिसाब से ये जो ओवरलैपिंग हो रहा है बैंक निफ्टी, आप जस्ट वॉल्यूम चेक करेंगे, आप देख लो अभी कितना रिटेलर्स पार्टिसिपेट कर. नोटिस करो यहाँ पे प्राइस इज ट्राइंग टू मूव डाउन. ये चेक करो वॉल्यूम कितना ड्रॉप हो रहा है. Srinivas's question is, should we move 117.5 levels of 1550 option to 1112 considering the decay? Just wait, sir. Nothing in an urgent to moving any orders on the options. Okay. Let the price come to near to the entry point. Let it cross minimum above this 17,607, 608 ka levels. At that current stage, we will check कि कितना premium decay is there. Then I'll be moving any changes on the orders. As of now बिल्कुल भी urgent नहीं है order. Anand sir is asking, sir Anand sir, are you asking about the live session morning 2 hours and evening 2 hours? Will it be good instead of half day? Are you asking about the live session, sir?
Let's see, sir. We'll think on it. One more good idea, but let me think on it as per the time availability. Mukesh sir is asking, how do you find momentum? Very simple. Momentum process finding is again very simple. Okay, momentum finding process becomes very simple. मतलब आप समझ लो यहाँ पे प्राइस कहाँ पे ट्रेड कर रहा है, किस जोन पे ट्रेड कर रहा है. वन थिंग इज स्टेइंग अबव वीवैप, ओवरलैप कर रहा है. फॉर अ मोमेंटम प्राइस, मोर इट इज ओवरलैपिंग, मोर इट एक्सपैंड्स. जितना ज्यादा ओवरलैप कर रहा है, हमको ये चीज देखना, प्राइस ओवरलैप कर रहा है या वीवैप के ऊपर, वीवैप के नीचे, दैट इज फाइन एनफ. इफ इट इज ओवरलैपिंग अराउंड द वीवैप, तब मोमेंटम नहीं है. इट इज ओवरलैपिंग अबव और बिलो वीवैप, कहीं ना कहीं एक अग्रेसिव मूव दैट विल गिव अस द मोमेंटम. ये वन सिंपल वे यूजिंग द वीवैप to identify the momentum. विवाह आ चुका है, निफ्टी की विवाह आ चुका है. थोड़ा सा टाइम ले रहा है, कोटक अभी के लिए ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हुआ है. करंट स्टेज ऑफ मार्केट में मार्केट कुछ ज्यादा ही पेशेंस. वापस एक वीवैप से सपोर्ट लेने की कोशिश. और निफ्टी में दो सिनेरियो. फिलहाल के लिए ऑर्डर नहीं हुआ. वापस विवाह आ चुका. बैंक निफ्टी में भी कोई अग्रेसिव वॉल्यूम दिख, काम रिलैक्स से ट्रेडिंग चल रहा है. बैंक आराम से डीआई के आसपास ट्रेड करता है, और आईसीआईसी बैंक आराम से लो के. Okay, Ankur sir is asking, can we use Bank Nifty spot chart for volume and the data exact as?
So to be honest, I have no idea. Trading View is providing the volume on spot chart, but practically on Indian market, spot chart can't be directly traded. Okay. So I don't know what is those volume which is pumping in. So that is where I'm just sticking with the futures volume which is there. Rather than not focusing much on the option side wala volumes. People भी नहीं आया भी बोलते ना ड्राइड आउट हो चुका है वॉल्यूम हो चुका है बैंक सारी निफ्टी देखते हैं अभी तक जो भी सेलर्स का अटेम्प्ट आया हुआ है उस हिसाब से दिस इज द लोएस्ट वन फारिंग दिस वन टू थ्री एंड द टाइम सारे सारे चारों अटेम्प्ट में दिस करंट अटेम्प्ट एज द लोएस्ट वन और वन थिंग भी क्लियर है जो भी ये जो विभाग के ऊपर एक घंटे में ट्रेड कर रहा है ऑलमोस्ट मोर देन 1 आवर 1.5 आवर ऑल्सो तो नॉर्मल रिटेलर्स क्या करेंगे पुलिस ट्रेड जिन्होंने भी अभी पोजीशन पहले से क्रिएट करके बैठे हैं ऑन द बैंक निफ्टी और सॉरी ऑन द निफ्टी मिनिमम वीव अप के नीचे स्टॉप लॉस और इसके नीचे स्टॉप लॉस रखेंगे राइट तो अभी कोई भी एक अप मूव प्लान करना है बिग प्लेयर्स वांट टू मेक एनी वन अप मूव देयर इज वन मोर चांस एक बार वीव अप के नीचे या इस जोन के नीचे आके स्टॉप लॉस ट्रिगर करके उसके बाद रिवर्सल करेंगे देन the trade which we are expecting bullish above 17613 that will give us and more additional confirmation because यहाँ पे retailers भी trap हो चुके trap का फायदा भी हम ले सकते हैं सारे वो कैंडल कितना नैरो होते जा रहा है स्थिति यहाँ से दो सिनेरियो मिनिमम आई विल बी प्लेइंग आउट ये तो प्लान है इसके बुलिश ट्रेड क्रिएट कर या फिर एक ट्रैप एंड देन रिवर्सल एडिशनल एडवांटेज हमको मिल जाएगा इस स्टेज ऑफ बुलिशनेस के लिए एंड फॉर एनी बियरिश सिनेरियो मुझे प्ले करना है इस करंट स्टेज ऑफ मार्केट में मिनिमम वीवा के नीचे प्राइस ट्रेड कर से प्राइस ट्रेड कर रहा है बिहेव कर रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा मिनिमम 1050 देन उसके पहले बियरिशनेस भी बस अभी दोनों निफ्टी और बैंक निफ्टी फिलहाल के लिए वॉल्यूम कम है बट वीवा के ऊपर टिक रहा है ये द क्वेश्चंस ऑन स्टॉक स्पेसिफिक इंडेक्स कैन आस्क इन द चैट बॉक्स फिलहाल के लिए फॉर दिस प्राइस टू बस एनी
It's in orders. What are all the trades which made? Now just have one more look on this stock. IT stocks में क्या कुछ सिनारियो प्ले आउट हो रहा है, कुछ भी हो गया आईटी स्टॉक्स आराम से बता रहा है मैं प्रीवियस डे लो के ऊपर आराम से ट्रेडिंग कर रहा हूँ। डायरेक्ट इन मेरा आईटी स्टॉक्स भाई निफ्टी ऊपर है नीचे है साइडवेज है आराम से ठीक है लो के ऊपर ट्रेडिंग करना शुरू हो चुका है। What is the I of this Nifty? 1449.30. Okay. So Nifty here somewhere between Nifty, Infosys, the IT का Infosys stocks looking bullish for me above this DIs. कहीं ना कहीं सारे orders are in the bending stage. Okay, one good question, sir. Any gap or gap and go setup you trade or always wait for some price action on the gap day? Sir, it's not about gap up or gap down is always first of all a disadvantage for an option sorry intraday traders. Okay, तो उसके हिसाब से better to wait for minimum 5 to 10 minutes into the minimum 5 to 10 minutes to understand the price because no point in spoiling your entire day just because over excitement of the gap move देख के ओवर एक्साइटमेंट होके फुल ट्रेडिंग सेशन तो स्पॉइल नहीं कर सकते। बेटर गैप अप और गैप डाउन 5 मिनट्स मिनिमम जस्ट रिलैक्स 1% के ऊपर गैप डाउन 1% के आसपास गैप अप गैप डाउन हो रहा है मिनिमम 5 to 10 मिनट्स। अब आई जस्ट लुक एट द प्राइस इन कंपेयरिंग विद द वी वैप के ऊपर क्लोज हो रहा है नीचे प्रोसेस सिंपल इस चीज को मैं क्लोजली मॉनिटर कर बैंक निफ्टी एक और अटेम्प्ट मिल रहा है टू गेट अ का scenario same volume will be crucial on the bullish side also। जितनी देर सेलर्स बिल्कुल भी वॉल्यूम लेके नहीं आ रहे हैं तो अब बायर्स साइड की वॉल्यूम कितना कहाँ से है वो अभी वेरी क्रूशियल रहेगा। जितना भी अटेम्प्ट हुआ फ्रॉम द सेलर्स वॉल्यूम कोई अग्रेशन नहीं दिख रहा है। अभी इफ प्राइस वांट टू मूव अप वी नीड एन अग्रेशन। इस अग्रेशन के हिसाब से विल बी बेटर टू अंडरस्टैंड मार्केट में कोई वॉलेटिलिटी या कोई मोमेंटम मिलेगा या फिर ये सिर्फ साइडवेज की टाइम पास करता रहे। कोटेक्स ऑर्डर्स नॉट गॉट एग्जीक्यूटेड का सिनेरियो सेम है बैंक निफ्टी पे होता है एक पास की ऑप्शन मिल रहा है। वन गुड क्वेश्चन from Shubham sir, how can I work on my psychology? I sometimes book profit before my targets, see just because seeing the profits. Very simple, sir. If you have any problem on booking profits very earlier, once you are into the trade, once you enter the trade, don't see the MTM. Don't see the MTM and also make sure कि आपका quantity क्वेश्चन साइजिंग करेक्ट होना चाहिए। Traders start panicking if there is a wrong क्वेश्चन साइजिंग मतलब समझ लो if SL gets trigger you are losing 5% 7% or anything more than that वाला capital or anything more than 3% of your capital on a single trade तो आप क्वेश्चन साइजिंग completely wrong है तो आप you have to reduce your question size and then execute your trade. These two steps can help you a lot, Shubham sir, from booking your profits very earlier. Okay.
डेली मार्केट ऑफ ऑप्शन चल रहा है। डेफिनेटली ऑप्शन में डीके है, डेफिनेटली वन को चेंज द लेवल्स ऑफ ऑर्डर्स, मिनिमम लेट द प्राइस कम पॉइंट, इसके बाद हम I'll be changing those option levels for my entry because of DK. ये जो भी डायरेक्शनल ट्रेडिंग कर रहे हो, ऑप्शन बाइंग ऑप्शन सेलिंग, जो भी डायरेक्शनल ट्रेडिंग कर, दिस इज वेयर ट्रेडर्स गेट फ्रस्ट्रेट होके अग्रेसिवली पंच कर देते हैं ऑर्डर्स को, देख लेते हैं क्या हो जाएगा। तो नहीं है, फॉर मी द प्लान इज हियर, अबाउट दिस बुलिश प्लान, मतलब अबाउट दिस बुलिश प्लान, उससे पहले अर्जन करने से कोई फायदा नहीं है। पीछे ट्रेड हो, प्राइस स्टार्टेड ट्रेडिंग बिलो दैट, देन आई विल बी फोकसिंग ऑन बेयरिश। तो इसके बीच में जो भी ऑप्शन हो रहा है वो मेरे लिए नो ट्रेड जोन है, में ज़्यादा दिमाग लगाने से बेनिफिट नहीं मिलने वाला। इसलिए फॉर एन इंट्राडे ट्रेडिंग वेरी इंपॉर्टेंट इज, यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हेन टू ट्रेड, व्हेन नॉट टू ट्रेड। आज की सेशन में फिलहाल के लिए ऑर्डर्स प्लेस्ड है, सिर्फ एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है, मार्केट हिसाब से साइडवेज है, ओवरलैपिंग को ऑप्शन हो रहा है। फर्स्ट दिस इज वेरी वेरी एक्सपेक्टेड प्राइस बिहेवियर, वन मोर थिंग वाज दिस, तो एक दो घंटा वीवैप के ऊपर ट्रेड करना है, तो रिटेलर्स जो भी फ्रस्ट्रेटेड है, मॉर्निंग से ट्रेड नहीं लिया, क्या करेंगे, अग्रेसिवली बस वीवैप के ऊपर ट्रेड कर रहा है, उसके हिसाब से कहाँ पे स्टॉप लॉस रखे, बिलो दिस वीवैप, बिलो दिस, इसी के आसपास स्टॉप लॉस रखेंगे, तो उनके हंटिंग हो रहा है। इसीलिए बता रहा था, दिस विल मेक अ डायरेक्शनल ट्रेडर गेट फ्रस्ट्रेटेड, विदाउट द प्लान द ट्रेडर विल गेट फ्रस्ट्रेटेड। बस प्लान है तो आप फ्रस्ट्रेशन की क्रिएट ही नहीं होगी। Question from Pavan says, if we would like to have a separate session on how to read OI data in option, it might this may give edge in every night. Noted, sir. Will try to plan a session, because as of now the next free webinar is planned on option trading only. The option buying. Let you know how to get the access. Everyone can stay connected on Twitter and Telegram to know the details on of the upcoming free webinar and the access.
यहाँ से प्राइस को थोड़ी देर वीवैप के नीचे ट्रेड करने दो फॉर एनी बेरिश ट्रेड प्लान, बस आई एम टेलिंग लेट इट स्पेंड सम टाइम। ये मॉर्निंग जो भी बायर्स है दे आर कमिंग इन और नॉट, उस चीज को चेक करना पड़ेगा। बिकॉज के वीवैप के नीचे क्लोज हो गया तो मैं शॉर्ट साइड अग्रेसिव ले लूंगा। आई एम नॉट मच कंफर्टेबल बिकॉज यहाँ पे जो भी मॉर्निंग बायर्स है वो डिफेंड के लिए आ रहे हैं कि नहीं, दैट्स द क्वेश्चन मार्क। एंड यस, वन मोर थिंग नवीन सर has also pointed out here, volumes are very low, volumes are low. बैंक निफ्टी व्यू, बैंक निफ्टी नथिंग इज हैपनिंग। ओके, बैंक निफ्टी सुबह से ओवरलैप, ये मॉर्निंग एक ट्रैप कर चुका है, स्टॉप लॉस हंटिंग हो चुका है। उन्होंने भी 15 मिनट कैंडल के ब्रेकआउट या मॉर्निंग अग्रेसिवली इस पोजीशन किया, स्टॉप लॉस ट्रिगर करके उसी कैंडल में रिवर्सल कर चुके हैं। विवाद के ऊपर ट्रेड करना मतलब अगेन ओवरलैपिंग का सिनेरियो, इट्स वेट एंड ट्रेड वाला डे ऑन बैंक निफ्टी। यहाँ से बैंक निफ्टी में भी कोई अग्रेसिव वॉल्यूम दिख नहीं रहा है व्हेन प्राइस इज ट्राइंग टू कम टुवर्ड्स डाउनसाइड। ना वॉल्यूम की प्राइस मूव ट्रेनिंग इज ऑलवेज अ बिगेस्ट क्वेश्चन मार्क। कोटेड फिलहाल के लिए आई विल बी रिमूविंग ऑर्डर्स ऑन कोटेड, बस प्राइस यहाँ पे ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हुआ एंड ट्राइंग टू पुश बैक डाउन। Just the Nifty is just more staying inside the first 15 minute का range, बस 15 मिनट का आई और लो के आसपास प्राइस जस्ट ओवरलैप करता जा रहा है। ऊपर कोई न्यू ऑप्शन नहीं दिख रहा है निफ्टी में। बैंक निफ्टी का सिनेरियो भी बिल्कुल सेम है, बस 15 मिनट के आई और लो के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेडिंग चल रहा है। फीचर्स रिमूव टेकआउट हो, बाकी तो पूरा तो सिर्फ ट्रैपिंग था, स्टॉप लॉस हंटिंग था, बाकी तो पूरा ऑप्शन ओवरलैपिंग के प्रोसेस साइड विद इन फर्स्ट range। ये आपको समझ आ गया होगा, डायरेक्शनल ट्रेडिंग करना यू शुड हैव अ प्लान, ऑप्शन बाइंग करना यू शुड हैव अ प्लान कि वेयर टू रिएक्ट मोर, व्हेन टू ट्रेड एंड वेयर नॉट टू। प्लान यह था, बुलिशनेस नहीं आया कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी बियरिशनेस के लिए उसके नीचे यू आपके नीचे प्राइस गेट ट्रेडेड। ओके, बैंक निफ्टी बिल्कुल भी कोई भी सिनेरियो प्ले आउट नहीं होता, ओवरलैप ओवरलैप की सिनेरियो। इस उदित से प्राइस वीवैप के नीचे थोड़ा सा बैंक निफ्टी चल रहा है, बट अग्रेसिव ऑप्शन नहीं है, सिर्फ एक कैंडल वीवैप के नीचे अभी ट्रेड कर रहे हैं। देखते हैं तीन चार या दो तीन कैंडल मिनिमम ट्रेड होने के बाद रिएक्शन समझेंगे। बिकॉज ये जो भी मॉर्निंग बायर्स थे उसके बाद ये ट्रैप और उसके बाद की रिवर्सल बायर्स इस हिसाब से अभी रिएक्ट कर रहे हैं। इस जोन में प्राइस फर्स्ट टाइम आ रही है, अप्रोचिंग देयर जोन वेरी फर्स्ट टाइम। This stage of market में traders get frustrated, डायरेक्शनल ट्रेडर फ्रस्ट्रेट होके रैंडम ट्रेडिंग लेना शुरू करने में वहीं पे प्रॉब्लम क्रिएट। तो दोनों बैंक निफ्टी और निफ्टी फर्स्ट 15 मिनट्स के रेंज के आसपास ही प्राइस स्टेशन हो रहा है।
slowly price back down. Candle color देख के aggressive trading definitely not a good sign. 101% not a good sign. Do you keep pushing overnight or you play only intraday? So, right, maximum my trades are intraday only. Max to max trades are intraday only. Overnight. And one more question. Answer option chain analysis. So option chain analysis, when I'm more into any confused case, that is where take option chain. As of now, there is not much to use. Scenes are very clear. Overlapping ज़्यादा हो रही है. Candle color देखे full aggression हो तो good sign. कि कोई चीज नहीं, सब कुछ क्लैरिटी क्लियरली दिख रहा है कि वो लो वॉल्यूम्स है. प्राइस ओवरलैप में ज़्यादा इंटरेस्टेड है. प्राइस बिहेवियर में कोई कुछ अगर दिख नहीं रहा है. Things are very clear, right? ऑलमोस्ट सारे स्टॉक्स के आसपास स्टेशन. ये चीज आप जस्ट with this current market now and rethink on it. Have you or will you wait for the trades or in the market like this, or you will just go aggressively jump and take trades? No momentum wala market. Let me know in the chat box. Will you be already would have taken some trade, or it's more better to wait and trade in this kind of market? Just comment your answers on the chat box. Let's see कि असली में कोई मोमेंटम बिना वाला मार्केट में साइलेंटली बैठने में कंफर्टेबल फील करते हैं या फिर अग्रेसिव ट्रेडिंग करने में कंफर्टेबल. Let your answers on the chat box. If you are comfortable to wait, just type yes. If you are not much comfortable to wait, just type no in the chat. In this kind of no momentum market, just be interactive. Just type answer first. That will give you an understanding first. What is your style of trading? क्या आपके स्टाइल ऑफ ट्रेडिंग क्या है, आपके कैपेबिलिटी ऑफ वेटिंग कितना है, सब आपको जब समझ आएगा. Only when you first try to answer this question, understand what is your real requirement from a trading in the. Mohit sir is telling already taken trade stop loss trigger. There's nothing, sir. There's no volume नहीं हो रहा है. वाले मार्केट में अग्रेसिवली ट्रेड करने की ज्यादा इंटरेस्ट प्रॉब्लम. Kotesh sir is asking, I'm holding Kotak Bank 920 the call option 5 lots, Bank Nifty 39 900 the call option 5 lots.
Quotation, what is your entry point? Your entry point. If you're updating genuinely, I can understand what stage of MTM is running around you. Kotak Bank 920 का call option. Kotak Bank 920 का call option have entered at 79. Now it's trading at 44. Sir. Kotesh sir, let you just confirm me again. Have you entered the Kotak Bank 920 का call option at 79? Now it's somewhere trading around 44 का level से. ना stop loss रख के बैठे हो आधा option to sir half of your option is gone. Almost 44. 40 आ गया तो आपका 50% ऑप्शन चला चुका है डे बिफोर यस्टरडे सर दिस व्हाट प्रॉब्लम्स है आप स्टॉप लॉस क्यों नहीं रखते हो सर दिस वन मोर 39,900 कॉल ऑप्शन यू एंटर्ड एट 371 फिलहाल के लिए इट्स ट्रेडिंग अराउंड 90 सर बैंक निफ्टी का कॉल ऑप्शन अभी स्टिल इफ यू आर होल्डिंग हियर इट्स अगेन रिस्की ओनली ज्यादा कुछ मोमेंटम में थोड़ा सा प्रॉब्लम है क्रिएट हो सकता है बट यू वांट टू स्टिल होल्ड आप मिनिमम ये तो स्टॉप लॉस रख लो सर इस लो के नीचे स्टॉप लॉस रख लो ओटे सर इसके नीचे वो कॉल ऑप्शन में बने रहना none it's just I could say of no use okay because दोनों options आपके become right out of the money बैंक निफ्टी मैक्सिमम सर ये बैंक निफ्टी ये लो ब्रीच कर चुका है तो उसके ऊपर उस ऑप्शन पे बने रहना आई डोंट थिंक इट विल बी अ गुड टाइम ऑफ होल्ड द ट्रेड इन अ बिकॉज टुमारो इज अ वीकली एक्सपायरी राइट तो एक दिन की एक्सपायरी रख के नॉट मच एडवाइस ऑन बैंक even here it's a risky one only but still want to hold आप ये लो मॉर्निंग का लो स्टॉप लॉस रख सकते हैं मैक्सिमम बस वो बीच कर दिया उसके ऊपर उस 39,900 पहले से ही वो ऑप्शन आप 70-80% आप लॉस में कटे हो उस ऑप्शन good to know that traders are more comfortable to wait and trade rather than jumping on the market यहाँ से क्या कर रहा है थोड़ा नैरो रेंज कैंडल है सर बैंक निफ्टी की प्राइस और नैरो रेंज फॉर्मेशन आप देख पा रहे हो वापस इस नैरो रेंज आप वॉल्यूम चेक करो check the volumes further drop down this is selling I did a mistake I could have exited hit your stop loss yes sir always trade with a stop loss very important आपका stop loss के level breach हो चुका है तो बाहर आ जाओ because no point in holding on to trade that ये trade will reverse back for use yes sir nothing much left over in that option sir which you are into देख पा रहे हो सर प्राइस इसके नीचे ट्रेड करने की कर रहा है बट वॉल्यूम्स इज द बिगेस्ट क्वेश्चन मार्क वॉल्यूम्स ज्यादा नहीं make sure traders make sure to subscribe this YouTube channel and turn on the bell icon to get the notifications of all the live markets. Also, if you support this live market section, click on the like button of this live market
बिल्कुल भी बोल सकते हैं काइंड ऑफ अ बोरिंग मार्केट, बोरिंग प्राइस, बट you have to accept this kind of market. A gap up or gap down is always a disadvantage for an intraday trader. Okay. Intraday, in terms of movement, in terms of price movement, एक disadvantage stage में खड़ा रहता है. So in the bank nifty, any other reference level which is here is 2 days back a low is back the market. हम पे एक रेफरेंस लेवल है 2 days बैक का अनटेस्टेड, वेयर मल्टीपल टाइम बायर्स केम. अभी क्या कर रहे हैं, और वैसे ही वॉल्यूम कोई खास नहीं, आर वेरी लो ओनली, खास वॉल्यूम आपसे कुछ नहीं दिख रहा है फिलहाल के लिए. स्लोली बैक डाउन कर रहा है उसमें के पास स्टॉक्स को ड्रैग डाउन कर रहा है. वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टॉक इज ट्राइंग टू ड्रैग द निफ्टी डाउनसाइड. द क्वेश्चंस पीपल कैन आस्क चैट बॉक्स. फिलहाल के लिए इट्स जस्ट वेट एंड मॉनिटर वाला मार्केट है. से भी ये कैंडल कलर देख के अग्रेसिव ट्रेडिंग करने से अच्छा है जो भी बायर्स क्या कर रहे हैं, आर दे कमिंग फॉर अ डिफेंड, which need to be closely monitored because the volumes are very low in the current stage of market. Sunny is one more stock track the be on the downside. Yeah, reached 539 option. For buying any put option at the current stage ना थोड़ा सा यहाँ पे option price में दो या फिर एक pullback rejection होने दो. Better option I'll be planning my bearish because volumes are very low volume environment. Rather than aggressively going for any put option, it and on a pullback rejection, it's better to execute it.
Prashant sir is telling the voice is not clear. My voice is clear enough. Just make sure to confirm me is the voice is right. Voice is not clear. It is low. I will try to increase. I'll try to increase my volume also. Voice is clear but low. Oh, fine, fine sir. Now the voice might be very clear enough. यहाँ से निफ्टी बिल्कुल भी चेस करने से कुछ फायदा नहीं है सर. Tell you honestly, looking at candle color chasing the market. Okay, Prashant sir, I will recheck on it. I will recheck on it. Okay. तो यहाँ से प्राइस जस्ट चेसिंग द प्राइस आई डोंट थिंक इट्स अ गुड साइन ऑफ एडवाइसेबल प्राइस मोमेंटम. ये जो भी मॉर्निंग बायर्स हैं, हाउ द बायर्स आर रिएक्टिंग, दैट नीड टू बी वेरी इंपॉर्टेंटली मॉनिटर्ड. जैसे ही कैंडल कलर दिख रहा है रेड तो मैं जाके कूद अग्रेसिवली पुट ऑप्शन खरीदूंगा या बियरिश साइड खरीदूंगा. आई डोंट थिंक इट्स अ गुड एडवाइस. सेम रिटेलर्स भी वही करेंगे राइट. कैंडल कलर देख के अग्रेसिवली शॉर्ट साइड में फोकस ज्यादा करेंगे. इन बैंक निफ्टी में स्पेशली दिस लेवल द 2 days बैक का लो ये वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा. तो जब प्राइस नीचे जा रहा है बिल्कुल भी अग्रेसिव वॉल्यूम नहीं है. दिस वन मोर थिंग व्हिच नीड टू बी कंसीडर्ड हियर. ओके ओके यू देखते हैं. वी आर वेटिंग मार्केट टू गिव एनी गुड मोमेंटम वाला ट्रेड विदाउट मच ऑफ लो वॉल्यूम्स. बट फिलहाल के लिए तो वो लो वॉल्यूम की प्राइस बिहेवियर इज वेरी हाई. कोई क्लैरिटी ऑफ मोमेंटम नहीं है उससे ज्यादा. तो इट्स मोर इनटू अ लो वॉल्यूम wala price be given. More the low volume price is moving down, same way the price has an higher probability to reverse back, come back to the VWAP also, which we need to remember. Which is notice कर रहे हो what is happening. Price is one round making them to back to VWAP both on Nifty and Bank. ये आपको थोड़ा सा क्लैरिटी मिल गया होगा कि वॉल्यूम लो है तो चेस करने से कोई बेनिफिट मिलेगा तो आई डोंट थिंक एनी बेनिफिट मिलने वाला है. अब एक चीज समझ लो यार, इन द लाइव सेशन भी मुझे कुछ चीज यहाँ पे प्रूव करना है, ट्रेड देख के कूदना है तो आई वुड हैव ट्रेड लेना बड़ी बात नहीं है. चार्ट को समझो, चार्ट में से कोई इन्फॉर्मेशन दिख रहा है उसके हिसाब से ट्रेड लोगे. इट्स अगेन फॉर योर बेनिफिट ओनली. मार्केट ओपन है, मार्केट नीचे जा रहा है ऊपर जा रहा है, आई विल बी टेकिंग ट्रेड्स मींस देन दैट इज नॉट अ गुड साइन ऑफ अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर. एक दिन में एक ट्रेड भी लो बट ट्रेड विद कॉन्फिडेंस और विद क्लैरिटी. प्राइस क्या हो रहा है, क्या कुछ बिहेवियर. आप एक चीज समझो, यहाँ पे 15 मिनट की रेंज पे, फर्स्ट 15 मिनट्स की रेंज पे बैंक निफ्टी ओवरलैप कर रहा है और प्राइस जाते जाते वॉल्यूम ड्रॉप होते भी जा रहे हैं. यहाँ पे कोई अग्रेशन नहीं दिख रहा है. मॉर्निंग से वी वर वेटिंग फॉर द कोटक बैंक टू क्रॉस, क्रॉस नहीं हुआ. वी आर नॉट एग्जीक्यूटेड. पे लेवल्स भी मार्क था, उस लेवल्स को क्रॉस नहीं हुआ. नॉट टेकन एनी हिट्स. ट्रेड मिल रहा है तो करेंगे. इज रिस्क टू रिवॉर्ड यस टू फेवर मी बिकॉज it's I am sharing it same trades. I am trying to on my broker term. So my capital is also important for me.
just because we are in the live session इसका मतलब नहीं है, right? I can waste my capital like anything by doing random. मोमेंटम नहीं है तो ट्रेड लेना कोई जरूरत भी नहीं है. लेट्स सी, ये कैंडल कैसा क्लोज हो रहा है, बिकॉज बैंक निफ्टी में जो भी प्राइस बिहेवियर चल रहा है फिलहाल के लिए, पिकअप के नीचे आराम से ट्रेडिंग हो रहा है. प्राइस ट्राइंग टू मूव अप इमीडिएटली, सेक्शन होने की कोशिश क्लियर कट दिख रही है बैंक निफ्टी में. तो कैंडल कैसा क्लोज हो रहा है, दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट. आई वांट टू प्लान एनी bearish trade at the current stage of market. Okay, फिलहाल के लिए I'll be having Bank Nifty future on my watch list and parallelly 39,500 का put option also having in watch list. Okay, फिलहाल के लिए कैंडल कैसा क्लोज हो रहा है, will be very important. The close of this candle will give us a broader picture की, because यहाँ से VWAP के नीचे आराम से ट्रेड कर रहा more than 20-25 minutes, but the way in which candle is closing on a bearish note, that will give us a clue for an bearish trade plan के लिए. का भी सेम सिनेरियो, ये करंट कैंडल का क्लोज will be give us a very clear cut idea कि is there any intention for the sellers push the price down. Okay, टेंशन बिल्कुल भी नहीं है तो ये फिर से वीवअप जाके रिवर्सल होके वीवअप पे खड़ा हो जाए. Let's see whether is there any clear intention to push the price towards downside on. This is the reason I'll be focusing having future Bank Nifty future in the watch list. Also the Bank Nifty का 39,500 put option in the watch list. This candle की closing and very very important though. कल के लिए विवाह के नीचे आराम से है निफ्टी और बैंक निफ्टी. कैंडल क्लोज आप देख पा रहे हो अभी फिलहाल के लिए अच्छा खासा. Yes, for the close becomes a crucial part. अब क्लैरिटी मिलेगा, ये जो भी बायर्स है वो ट्राई टू कम इन, और ये जो भी हाई लेवल से सेलर्स आने की कोशिश कर रहे हैं, नाउ विल गेट अ क्लैरिटी कि ये अग्रेसिवली क्लियर बियरिश कैंडल फॉर्म होके क्लोज कर रहा है क्लियर बियरिश नोट में, देन आई विल बी प्लानिंग माय बियरिश ट्रेड. या फिर इफ प्राइस वीव अप घूम गया तो मार्केट साइडवेज कंटिन्यूएशन आराम से चलता रहेगा. Okay, these are the two stage of plan. Any bearish trade and in this current stage, फुल प्राइस वीव अप घूम गया मतलब क्लियर कट है, ये सिर्फ एक ट्रैपिंग वाला प्राइस बिहेवियर है, बाकी कुछ नहीं हो. Let me tell you, practically by this time, traders, directional traders would have already taken too many trades and they would have already lost their money in there, figuring out stop loss because of no momentum in the price. I'm not speaking about scalpers who trade for 5.3.2. Speaking about a normal trader who ride a directional price for a target on towards the risk to reward basis. This is the more stage where traders will be more into what frustration, random trading, सब कुछ अभी के लिए शुरू हो चुका हो.
हिसाब से प्राइस मूव कर रहा है, मैं एक्सपीरियंस ऑलरेडी स्टार्टेड। वैसे ही बैंक निफ्टी तो पहले 15 मिनट के रेंज के अंदर ही ट्रेडिंग चल रही है, उसके अलावा कुछ करेक्शन बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। देखते हैं फ्रॉम हियर आर वी गेटिंग एनी क्लियर कट रिजेक्शन। यहाँ से रिजेक्शन मिल रहा है, बियरिश हियर बियरिश कैंडल क्लोजिंग मिल रहा है, तो आई विल बी कंफर्टेबल टेक अ बियरिश ट्रेड ऑन द बैंक निफ्टी। के पहले बिल्कुल भी ओवरथिंक करना आई डोंट थिंक पॉइंट ऑफ प्राइस। Borosil is telling, sir, my view today will be like 29th of August. What happened on 29th? 29th August market was fully overlapped. Let's see, sir, देखते हैं possible scenario. Yes, 29th of August market made a gap down, but पूरा sideways, making the trader to get frustrated, easily lose money. This is what very important. First, a trader has to stop losing money in this kind of time pass overlapping low volume market. As a directional trader has an option, ये वाले मार्केट में ट्रेडर्स इजीली लॉस कर देते हैं। जब मार्केट डायरेक्शन देता है तब उनके पास कॉन्फिडेंस कैपिटल कुछ भी नहीं बचा रहता टू एग्जीक्यूट ट्रेड्स। हैपनिंग ऑन बैंक निफ्टी बियरिश ट्रेड के लिए वेरी सिंपल सिनेरियो है। यहाँ से क्लियर कट एक रिजेक्शन चलती है फॉर अ बियरिश ट्रेड, प्राइस वीवैप के ऊपर जाके साइडवेज के ऑप्शन कर रहा है, मतलब ऑब्वियस सीन है कि देयर इज नो पॉइंट ऑन गोइंग अग्रेसिव इन दिस सिंपल ओवरलैपिंग मार्केट। Traders, make sure to, if you're still not subscribed, make sure to subscribe this channel and turn on the bell icon to get the notifications about all other live market session. Find this session useful. You would have learned something new in understanding the price, waiting for a trade, understanding the zone, when to trade, when not to trade. Just make sure to hit on the like button of this live market session. Price VWAP घूम चुका है, reversing back to VWAP, practically time pass. This is a kind of market, if you're not waiting it, आपके कैपिटल लॉस हो रहा है तो ऑब्वियसली होगा बिकॉज ऑफ यू आर मोर इनटू ट्रेडिंग एवरी डे। Because most traders first of all doesn't understand what is their main aim in the market। तो ये मतलब है हर रोज ट्रेड करना, हर वो, that's not the way real trading। Here again price is reversing back to the what is the information chart is giving us। यहाँ पे फिलहाल के लिए इट्स इन नो ट्रेड वाला जोन, बिल्कुल भी अग्रेशन बनने से बेनिफिट मिलेगा 101% नो। Trades, if it is coming, I am more comfortable to execute my trades। जैसे they are looking for morning bullish trade, में भी नहीं मिला, कोटक में भी ज्यादा कुछ नहीं मिला, अदानी में भी फिलहाल के लिए ट्रेड नहीं मिला है, एग्जीक्यूट नहीं हुआ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं ना। विल वेट फॉर द नेक्स्ट एनी अदर ट्रेड्स कमिंग। ओके, बिकॉज़ वन ट्रेडर वाज आस्किंग कि कैन वी गो फॉर अ पुट ऑप्शन, राइट? आई थिंक
in this live session or not, I have no idea. Arif Patan sir was asking, can we buy put option 39,500 का put option when price was trading here? समझ पा रहे हो, प्राइस वीवाप घूम चुका है ऑलमोस्ट 80-90 पॉइंट्स रिवर्स्ड। कैंडल कलर देख के इसीलिए मैं बता रहा था, कैंडल कलर देख के शॉर्ट साइड लेओगे तो आपके स्टॉप लॉस कटने की चांसेस ज्यादा है, रिवॉर्ड बिल्कुल भी मिलने की चांसेस प्रोबेबिलिटी जस्ट 10% है। तो इन फ्रंट ऑफ यू। निफ्टी और बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट बोथ आर closing back to the river। यहाँ पे मुझे कोई बेरिश ट्रेड प्लान करना, यहाँ से रिजेक्शन मिल रहा है, अगर रिजेक्ट हो रही है प्राइस, तो देन इट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर मी टू प्लान अ बेरिश ट्रेड। ओके, दिस विल बिकम अ गुड अपॉर्चुनिटी, देखते हैं वेदर वी आर गेटिंग इट और नॉट। आप आ चुका है फर्स्ट 15 मिनट के रेंज के अंदर ही प्राइस ट्रेडिंग हो रहा है। स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच इंफोसिस फिलहाल के लिए भी साइलेंट ऑप्शन। कोटक बैंक वीवा आ चुका है, इंडसइंड बैंक वापस वीवा आ चुका है। बैंक निफ्टी और इंडेक्स ट्रेड कर रहे हो तो स्टॉक स्पेसिफिक हेवी वेट कौन से स्टॉक्स है के प्राइस बिहेवियर के हिसाब से इंडेक्स मूव होता है। यू हैव टू क्रॉस चेक दैट आल्सो। जन रोज ही क्रॉस चेक कर रहे हो, आई हैव नो आइडिया अबाउट इट। तो भी कैंडल कलर देख के चेसिंग द मार्केट का लग गया स्टॉप लॉस बुक में वापस। अब व्हाट ट्रेडर्स डू, retail traders, they will start blaming market. Sir, I have taken option trade, sir, because bank nifty was below VWAP, sir, rejecting from VWAP, sir, now it is reversed back। just look at on your left side, यहाँ पे ये जो बायर्स है ये टाइम पास बायर्स नहीं है, राइट। डिफरेंट के लिए आएंगे, ये बायर्स क्या कर रहे हैं उस चीज को आप बिना समझे आप अग्रेसिवली ट्रेड करोगे तो प्रॉफिट कहाँ से आएगा सर। Because why I am focusing on this bias, after a gap down, buyers not allowed the sellers to even clearly close below the first 5 minutes, राइट। तो सेलर्स को अलाउ नहीं किया तो ये बायर्स कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ है, राइट। दैट इज द रीजन दे हैव केम इन ऑन द मॉर्निंग। तो ये स्ट्रेंथ वापस डिफेंस के लिए तो आएंगे, राइट। अग्रेसिवली ऐसी प्राइस को ड्रॉप डाउन करने नहीं देंगे, बिकॉज यहाँ से भी कोई वॉल्यूम भी नहीं था, लो वॉल्यूम के हिसाब से जो भी मॉर्निंग बायर्स उसका इक्विवेलेंट वॉल्यूम यहाँ पे मिलता। आई एम द फर्स्ट पर्सन टू गो फॉर अ शॉर्ट साइड, नहीं मिला, राइट। तो फ्यू ट्रेडर्स माइट हैव अ क्वेश्चन, सर फिलहाल के लिए मॉर्निंग के लिए हैव यू टेकन एनी ट्रेड और नॉट। यहाँ पे कुछ मोमेंटम है तो मुझे दिखाओ इंडेक्स में टू टेक एनी ट्रेड। ओके, कुछ मोमेंटम है आप मुझे दिखाओ टू टेक एनी ट्रेड कि नहीं है सर। द बैंक इन ट्राइंग टू कम अप। टू बी ऑनेस्ट आई एम नॉट अ स्कैल्पर हु ट्रेड फॉर 5 पॉइंट्स टू 7 पॉइंट्स वाला ट्रेडिंग, स्कैल्पर नहीं हूँ। डोंट लुक एट द मार्केट इन पर्सपेक्टिव ऑफ अ स्कैल्पर। मैं कभी भी नहीं देखता हूँ इन पर्सपेक्टिव ऑफ स्कैल्पर। I'm more happy to wait without even taking trade 1 day, 2 day, no problem. But when I'm taking the trade, I should be have a clear idea कि ये ट्रेड में क्यों ले रहा हूँ, क्या लॉजिक है, किस जोन पे प्राइस ट्रेड कर रहा है, व्हाट इज द रिएक्शन ऑफ द प्राइस। विदाउट दैट नहीं। एनी क्वेश्चंस यू हैव ऑन अ स्टॉक स्पेसिफिक इंडेक्स स्पेसिफिक है तो आप चैट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं।
by one question to be addressed करेंगे parallelly. If sir is asking, I didn't get you. At what point you have get me? And my voice from my end is, I think I have rechecked again. It's clear enough only, right? From my end, I have again rechecked the volumes. Believe it's clear enough only. Santosh sir is asking, ICICI Bank is showing some. Have a look at ICICI Bank on ICICI Bank. ICICI Bank so far इतना कोई aggressive strength नहीं. ICICI Bank is not came even to the VWAP, whereas other banking stocks, Axis Bank is trading near the eye of the day. Kotak Bank is above VWAP. Indus Bank is around the VWAP. Yes, it is asking Balkrishna Industries are just going up, down, above, below the VWAP. Just the rotation with the index is कोई clarity of thought नहीं है Balkrishna Industries current stage. Now very simple process. Up to get from the buyers, right? 17,580 से लेके 1740 मिड पॉइंट आसपास यहाँ पे आ रहा है. For any bearish trade on Bank Nifty, so in this, get the price aggressively from this candle or next candle, get a rejection and close below it. For any plan for bearish trade, okay? Bearish trade के लिए भी aggressive rejection at this point very important. On the upside, I'm just shown price 17 level, previous day का high, low, sorry, previous day का low. For any bullish trade, price has to beat 17,600 mark for even thinking of any bullish trade. नहीं तो यहाँ से रिजेक्ट हो रहा है, clear cut rejection, a bearish candle closing, तो मतलब I'll be planning any bearish trade on the market. Okay. Other than that, इसके बीच में जब प्राइस ट्रेड कर रहा है, इसको क्या बोलते हैं सर? डायरेक्शनल पर्सपेक्टिव में इट्स अ नो ट्रेड जोन. On the perspective of directional trader, it's a no trade zone because वैसे ही market is stuck in a tight range. डायरेक्शनल ट्रेडिंग करके टाइट रेंज में फंसने से अच्छा, on a lighter note, we'll check what are all the possibility of price behavior. या तो bearish traders आनी है, sellers आना है, तो यहाँ से रिजेक्ट करेंगे. Okay, if the bullish traders are more comfortable, price will start rotating here because ये जो भी sellers है डिफेंस के लिए आएंगे. यहाँ से इसके let it price go out of this zone or come below this zone के बीच में आराम से नो ट्रेड वाला जोन है.
Fair enough. One question, one element is thanks a lot more than making money, but teaching how to be. Yes, sir. For the last two, three trading sessions, we are connected in the live. All the time, the market is only sideways so far. So, opportunity has not come much to showcase you the live trades because last three live session which we are connected, all the sessions were only sideways. Price coming back above Viva. Yes. But remember, price is still in between the first 15-minute range. मतलब here बैंक निफ्टी even on the बैंक निफ्टी यहाँ से जो भी प्राइस trying to move up again the down move right till the VWAP the midpoint कहाँ आ रहा है ऊपर right think above this candle probably uh, want to accurately mark or above this zone तो जो भी if buyers are stronger VWAP से reject करने की कोशिश कर रहे हैं के ऊपर क्रॉस तो करने दो और आपको बिकॉज जो कुछ भी होना है ऊपर नीचे ओवरलैपिंग ऑप्शन चल रहा है और एनी रिजेक्शन बायर्स कंट्रोल लेने की कोशिश कर रहे हैं देयर इज एनी पॉसिबिलिटी ऑफ मोमेंटम टू प्ले आउट के ऊपर तो पहले क्लोज करने दो क्लोज अबव 39 584 85 बिकॉज आई एम जस्ट नॉट रैंडमली लेवल मार्क कर रहा हूँ आई एम नॉट टेलिंग द लॉजिक अबाउट इट ओके आई एम आल्सो टेलिंग यू व्हाई आई एम मार्किंग दिस लेवल एवरीथिंग इज नॉट लाइक मैं कुछ यहाँ पे हाइड नहीं कर रहा हूँ ये लेवल कैसे आया क्यों आया क्या लॉजिक है मैं हाइड नहीं कर रहा हूँ practically telling you क्या कुछ सीन probability can play out. This is how the practical trade plan we have to do. मार्केट खुल रहा है ग्रीन कलर बाई रेड कलर सेल का ट्रेडिंग नहीं है. It's not about real trading. It's all about the on spot plans which you are creating based on the price reaction. क्या हुआ है जो भी ट्रेडर्स रेड रेड कैंडल कलर देख के अग्रेसिव ऑप्शन और बियरिश ट्रेड करने वाले टोटली थ्रोन आउट ऑफ द मार्केट स्टॉप लॉस हंटिंग हो चुका है राइट. What I was looking, I was not looking at this candle color. जो भी लो वॉल्यूम से लो वॉल्यूम का मतलब क्या है रिटेल. On the left side these buyers are there who have not allowed the sellers to move price down despite gap down open. ये buyers है open के लिए आएंगे लो वॉल्यूम है जिस हिसाब से लो वॉल्यूम से डाउन मूव जा रहा है उसी लो वॉल्यूम से प्राइस शूटअप भी कर सकता है राइट. इसमें कोई डाउट नहीं है. सेम चीज हुआ लो वॉल्यूम से नीचे आया लो वॉल्यूम से ऊपर जाया बट इसमें क्या फर्क है स्विंग में स्टॉप लॉस हंटिंग हुआ बस. इसी स्विंग में ट्रेडर्स इजीली लॉस कर देते हैं उसके बाद मार्केट को ब्लेम करते हैं मार्केट ने मेरा स्टॉप लॉस फिगर क्या एग्जैक्टली मेरा स्टॉप लॉस फिगर से नहीं करेगा सर आराम से करेगा राइट. Our levels are clear for the Nifty and Bank Nifty. We have to react where I personally will be reacting. उस रिएक्शन लेवल से पहले अगेन ओवरथिंक करना बिल्कुल भी इट्स नॉट अ बेनिफिट. तो अभी बैंक निफ्टी में क्या दो ट्रेड्स होने 120 30 पॉइंट्स दो ट्रेड्स. Why Bank Nifty 39,584? Very simple. From this point, price came down back to Viva. इसका midpoint coming around 39,584 levels. Okay. He's trying to make an attempt.
one round on the upside. Whether it is crossing 600 wala mark, closing above. Focus back on the Nifty game. Of no orders has been removed. No open orders there. Nifty order I have removed it. Okay, on the 17,550 ka call option. Now let's see how this candles are closing. हिसाब से क्लोजिंग उस हिसाब से प्राइस को फॉलो अप करेंगे बैंक बैंक पे 1 more minute for the candle to close. Fantastic. Again, I'll be having this 17,550 call option in my watch list. Perspective of option B. तो यहाँ से जो भी प्रीमियम दिखे होना का होगा ओवरलैपिंग की मार्केट and Nifty and Nifty come up. Let's see whether it will close तो होने दो उसके ऊपर कौन से stock is supporting. Stock is more supporting. Which sector is supporting. ICIC coming back to revamp. Access is again up. Okay. These stocks थोड़ा सा support देने की 19,600 के ऊपर क्लोज नहीं कर रहा है बहुत इम्पोर्टेंट उस क्लोज फिलहाल के लिए नहीं मिल रहा है अबाउ 7600 मार्क ऑन द निफ्टी Recent sir is asking sir Nifty entry levels are same as morning no sir as of now Nifty entry levels पहले प्राइस को इसके ऊपर तो क्लोज होने दो जिस हिसाब से उसके ऊपर प्राइस क्लोज हो रहा है on the future to decide the trade स्टॉक्स धीरे धीरे ऊपर आने की कोशिश क्लियर दिख रहा है आईसीआईसीआई around which will try to move the price towards upside तक में थोड़ा सा वापस एक सपोर्ट मिल रहा है पुशिंग द प्राइस अप बैंक निफ्टी फिलहाल के लिए नैरो रेंज कैंडल में स्टेबल कर रहा है ICICI बैंक कमिंग बैक टू ईवा कोटक इज okay what will be the new order considering the time decay on 17,550 call option yes, I'll be updating you I'll be updating you about that also okay, फिलहाल के लिए will be also looking on terms of the Kotak Bank looking Kotak Bank 1900 ka call option I'll be having on my watch list once again. Kotak Bank 1900 ka call option be having on watch list once again. Yes, HDFC Bank is trying to move up. Yes, 101% agreed.
is slowly trying to up. Kotak Bank 1900 ka call option. I'll be entering above 60 levels. Kotak Bank 1900 ka call option. I'll be entering above 60 levels, considering the premium DK. Okay, considering the premium DK. Let this Bank Nifty, let this candle close. Nifty is trying to move up. Yes, trying to reach the day high. If nothing urgent. What's happening on the weekly? I will check on the Reliance. What is the behavior? This is also near day high. Very good. Rani near the thing coming around the day high mark. Has to happening on Bank Nifty. Check Bank Nifty. Bank Nifty. I'll be waiting for this candle to close. Get on the Bank Nifty. Okay. Bank Nifty. I'll be adding this 39 500 ka call option. Watch this. So 39 400 ka call option on my watch list. And Bank Nifty future is already in my radar. The bank waiting for this repeated bullish above levels on the options. Bank Nifty is looking bullish from current levels. Bank Nifty is looking bullish from the current levels. Okay. 39 400 ka call option. I'll be closely looking to execute trades above 335 levels. Okay. Above 335 levels on the Bank Nifty 39 400 ka call option. I'll be more comfortable to execute my trades. Okay. He is trying to straight away move options, so better I'll be shift my focus on the Bank Nifty, like shift in the focus because I was looking for a close here, but price immediately shooted up. Okay. This is the reason I'm focusing on the Bank Nifty. Happening on Kotak. Kotak looks bullish above 1900 call option, looking bullish about the levels. Hence, Bank Nifty closely we need to check what's the price reaction around this previous Dekha low. Okay, 39 400 का call option let it clearly cross 335 levels so that I'll be executing a bullish trade on the Bank Nifty with considering this previous day ka low is there as a reference level. That is the reason on 39 400 call option I'll be bullish only above 335 ka levels. Want to enter on future that is clearly above 39 65 levels on the future. As of now, will not chase the price on Nifty. Better will 1 second will wait
and then decide on the Nifty. Because my expectation, it was clear close above the 1700 to go for a bullish, but close nahi aaya. Next, immediately candle shoot up 20-30 points. So risk will become higher here. That is the reason I'm shifting is on the bank Nifty side. And as usual also on the Kotak Bank. How speed in which price is crossing this level will be very very important for the bank. Also Kotak, the way it's reacting, Kotak support is very much important for the bank Nifty to move towards upside. Without the Kotak Bank support, because Axis Bank is already supporting, ICICI Bank is also trying to support. Now, very important is the Kotak Bank support that will be giving a more clarity on the price movement. Let's see. I'm just trying to reverse back down again. Yes, putting a pre-order becomes very important, sir. An option of future, whatever the pre-order becomes very crucial. The reason I place a stop loss orders before stop loss trigger orders. Okay, that will help me to execute trade as per my comfort where I want to. Kotak Bank also I'm on the trade on the bank. The option is somewhere trading around 61 rupees 35 paise. Sure. Guru sir is asking, we check spot price too. As per your requirements, sir is telling I have taken the trade. Okay, let's see, sir, what happens. Kotak Bank, I'll placing a SL at the 6 rupees. Nifty, I have not taken any trades, sir. Nifty, I'm not much comfortable to execute trades. Nifty, I'm more into waiting stage. Kotak, I'm on the trade. Let's see what happens. Kotak, my downside stop loss will be 50 on the Kotak. Closely looking, is there any decay? But on the spot levels, stop loss is 19.
1895 ka levels. 1895 ka levels is reaching, coming out of that top. He as of now will much comfortable relax here, not chase. Need to see the price behavior how it's reacting. Also, we need to closely check which other stocks are supporting the peak. Let's see. The Kotak 1900 ka call option was looking bullish for me above 60 levels, with my SL placed at E6 as of now. Any DK, I will try to recheck on it, but as of now, in the current stage, my SL will be 50. One more question from Gaurav sir. My question is future price near previous days low, but spot price is not near. Future price will close above previous days low before bank nifty. Spot price should be checked that too. So not much required, sir. More confusing ourselves is not a good sign of trading. Okay, more confusing ourselves is not a better sign of trading. That is what I feel. Looking at future, spot, everything at a time will be more confusing. Either if you want to check the spot, stay with it. I personally check the future. So I'm sticking with that only. Better without any major confusion. One question is what is my SL on 39 400 ka call option? 39 400 ka call option SL will be around 275 levels. Around 275 ka levels. Very important. I'll be closely looking around this PS day ka low, speed in which price is crossing. That will be very important. If price started roaming, overlapping here, then it's waste of time staying on this trend. Let's see. The bank logically flattish bank also happening on flat Nifty flat. Kotak Bank, my SL will be 56 rupees as of now. I'll be closely looking at if there any premium decay because on the spot levels, I'll be focusing to keep my SL at 1895 levels. Okay. Nifty, I have not much aggressive to enter any trade as of now. As of now, keeping the understand what is the price because price just limited time span. I was expecting a close above this. We didn't get a close, but the next close price has shooted up. Right. So that will make our stop loss, my stop loss bigger. That is I have not chasing this Nifty. Happening on the IT stocks first of all because that will give a support for the on the bank Nifty required more Kotak react more. IndusInd Bank is flat. IT stocks TCS is trying to back up. Forces is also trying to
back on the upside. Okay. More support for the Nifty is coming from forces until that is more into a sideways option, not much pressing. And Nifty a small two red color candle, but this time it is coming up with low volumes. Let's see. Similarly, Nifty ka scenario is played out in a similar fashion. All small red color candles again with volumes stuck flat aggression on the quoted band. We have entered Nifty around 17613. What to enter Nifty on 17613 levels on the future? That means stop loss nearest available stop loss is somewhere around 17565 levels. That will be the nearest stop loss. We have entered at 17613. Our nearest SL will be 17565 levels. Is again going into more narrow range price. What's happening on the axis bank? Okay, so we trying coming up axis bank slightly. It's a good sign happening on ICICI because that stock was bank was slowly trying to recover back up. What's the price behavior on this stock? Okay, it's around VWAP. It's happening on Kotak at okay, AC upside move. How strong is the important IndusInd Bank being more into a flatter note? Okay, okay. These things are Nifty. Yes, you entered at 17613. Still probably in and around 75 color. That will be a better approach of Nifty trying to move up. Let's see. Kotak reaching the day high. Day high is somewhere around 1908.45. Let's see. Banks go up, move, and Nifty at Bank Nifty a clear close required above the previous day lows. The aggression will start coming. The Bank Nifty. Else Kotak Bank is getting over. See how the move comes. What is the aggression? Almost 12:15. He is high. Any queries you can ask in the chat box. I'll give you trying to move up. Speed is more comfortably important.
Because on Bank Nifty, price is trying to move up. How? What is the candle close? That will be very important. Narrow range overlapping is not much a good sign. An aggressive move, very important on the Bank Nifty, was a clear strength of idea that the Bank Nifty is also ready to move towards side. And ICICI Bank is silent. In aggression is required on this banking stock also. Is also getting more support from IT stocks. He is getting clear support from the IT stocks. Versus TCS is more dominating on the Infosys and TCS are trying to dominate the Nifty. Banking stocks are in a mode. And one more round of check on the banking stocks. Have to be aware because it is slowly trying to move up. The support is also coming, or is there an interest coming on the Bank Nifty also? That's very important to check. AC Bank flat, IndusInd Bank will the banks trying to give a support for the Bank Nifty. A strong idea out of it. Bank Nifty, the way it is getting more narrow range candle formation here, and not a good sign on the Bank Nifty. The way it is trying to form a narrow range candle here. From here, the picture becomes very clear. If the price has to aggressively start moving up from this point, it has to move up. मूव नहीं कर रहा है at this current stage of market on the 39,400 का call option. What I'll be doing, I will slowly pushing my SL on the upside to 305 levels. Okay, in the 39,400 का SL straight away to 305 का levels. Because यहाँ से movement आना है तो straight away it give us an aggressive move. Sideways time pass करना is of no use. Okay, this is narrow range formation, so now the buyers has to speed up to cross the price above the previous day's low and trading above it for an aggressive upside momentum. It's happening on Kotak. Kotak is silent. See,
Toaster is telling SBI and IndusInd Bank is not support. Kotak is trying to move up. MVK in the Kotak options. Yes, definitely there is a yes, traders who have taken trades on Nifty. If you have taken it, one trader has also mentioned Uday Singh sir has taken a trade on the Nifty. You are getting your 40 points here reward. So better you can now trial your stop loss at cost on the Nifty if you have taken your trades. Okay. Taken on Nifty trades, you can trial your SL at cost. If you want to book your profits as per your convenience, sir, you are getting 40 points as reward on the Nifty. Those who have entered trade above 15613 ka levels. Kotak Bank trying to move up, but there is a struggle at higher levels. This Bank Nifty I have already mentioned, right? Already the level also updated Bank Nifty. This candle ka close will be very important on Bank Nifty. The decider for the candle how it's closing. This current candle is closing above 39,700. That is more rewardful for the bulls to continue the price further easily on the upside. Take them. How this candle close and the next candle follow up move will be very important. The speed in which aggression move if it is coming, that will on the upside, that will tell us all those sellers are getting their trap stop loss hunting. They say trying to move up. Kotak option is trading around 62 rupees 5 paise. Now the follow up becomes very crucial for the bank Nifty. On any upside move, follow up becomes very crucial. So on the Nifty, okay, as per price which is trying to move up. From here, Nifty traders who have taken on the trade on the Nifty, either you have two options here. If you want, you can book your profits of more than 40 points here on the future, or you can trial your stop loss below this candle low. Either sir is selling, I got very good profit on buying trade. Okay, great. Okay, better where the bank Nifty is struggling to move upside. Nifty का struggle clear cut दिख रहा है बैंक struggling. कोटक see what's happening. कोटक को option trade कर रहा है somewhere around 62 rupees 30 पैसे. Okay, this is selling. Thank you, sir. I got good. I booked profits. Great. This sir has booked this profit. Either sir has booked this profit. Now, look the way it's struggling. And Nifty is not getting any such support here. बिल्कुल भी support नहीं.
Reason is asking, shall I enter now on Nifty? Sir, not now, sir. Point in it. As of Bank Nifty is not moving much. I expect yeah, Bank Nifty usually starts in even Kotak की struggle clear cut दिख रही है. So as of now, what I will do here is Bank Nifty में फिलहाल के लिए इतना कोई लेवल दिख नहीं रहा है. Okay. Kotak Bank either sir has made almost 50,000 profit today. कोटक बैंक फिलहाल के लिए फ्लैटिश ट्रेडिंग चल रहा है. ऑप्शन समवेयर अराउंड ट्रेडिंग अराउंड 60 का लेवल्स. एंड निफ्टी सपोर्ट नहीं मिल रहा है. On the Kotak Bank option, what I will do, I will move my stop loss slightly higher now. I'll be moving my stop loss on Kotak का 1900 का call option around 60 rupees 50 पैसे. Slowly मैं stop loss ऊपर move करता रहूंगा. So now on the Kotak Bank the trade become loss free on the Kotak Bank. जिस हिसाब से ये जो स्लो मोमेंटम है बिल्कुल भी कंफर्ट नहीं दे रहा है. We have a previous days low here. मोमेंट आना तो अग्रेसिव आना चाहिए. यहाँ से नई मोमेंटम मिल रहा है तो प्रीमियम डीके से बचना इज नॉट मच बेनिफिशियल. आईसीआईसी बैंक वैसे ही सपोर्ट नहीं कर रहा है. में बिल्कुल सपोर्ट नहीं है. बैंक निफ्टी के ऑप्शन में वैसे प्रीमियम डीके हो रहा है. बैंक निफ्टी ऑन 39,400. once I will be coming out of this trade, I'll be sticking only on the Kotak trade as of now. Because बैंक निफ्टी एक स्टॉक ऊपर एक स्टॉक नीचे is being more operated. बैंक निफ्टी से I'll be coming out of it. Kotak बैंक I'll trial my SL at 60 rupees 50 पैसे. देखते हैं what's the possible scenario which can play out on the Kotak. So as of now सिर्फ मेरा एक Kotak का ट्रेड है. बाकी तो मुझे बैंक निफ्टी बिल्कुल भी नैरो रेंज कंफर्ट दिख नहीं रहा है. बैंक निफ्टी आउट ऑफ द बैंक निफ्टी वाला ट्रेड. ट्रायल स्टॉप लॉस आई हैव ट्रायल में स्टॉप लॉस एट 60 रुपीस 50 पैसे. आराम से छोड़ देंगे कोटक को. देखते हैं व्हाट्स हैपनिंग ऑन द कोटक. ट्रेड डिटेल्स ट्रेड लॉजिक is I'll be sharing it. This information I'll be updating it. Okay, पहले few traders have already booked their profits. Sir Sridhar sir has booked his profit. बाकी तो बैंक I am holding. Let's see. डाउट है तो आप चैट बॉक्स में हो. कल के लिए अभी फिर जिस हिसाब से ट्रेडिंग हो रहा है बस वापस मार्केट इज गोइंग इनटू अ स्लो टेरिटरी. वो प्राइस मोमेंटम की क्रिएट हो रही है. कोई और क्वेश्चन हो तो आप चैट बॉक्स में कुछ पूछ सकते हो. देखते हैं थोड़ी देर के लिए क्या प्राइस करता है कोटक बैंक.
Bank, I'm still on the trade by filing SL to 60 rupees 50 paise. That is making the trade loss free and closely looking HOB वापस price is not trying to move up. वापस एक small narrow range के अंदर trying to move up. वापस एक small narrow range. That's a disturbing scenario. कह रहा है कि क्लियर कट मूव में दिक्कत आ रही है. So that is the main reason I have actually मैंने out of this bank nifty trade. इतना comfort नहीं दिखा रहा. Kotak as it was in going on towards the above our entry level आराम से ट्रेड कर रहा था. That is the reason I have tried the stop loss to make it loss free. देखते हैं क्या कुछ प्राइस बिहेवियर होता है. सिंपल. यही बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं है. क्वेश्चन है तो आप चैट बॉक्स में बैंक निफ्टी बिल्कुल भी ये जो मैचिंग आपको समझ आ रही है राइट. बैंक निफ्टी में जब वी आर लुकिंग एट समवेयर हियर मोस्टली लुकिंग बैंकिंग स्टॉक्स क्या कर रहा है. आईसीआईसीआई एसबीआई वाज स्लोली ड्रैगिंग डाउन. दैट्स अ इमीडिएट दिन. निफ्टी ऊपर जा रहा है बेस्ड ऑन प्यूरली ऑन द आईटी स्टॉक्स. बैंक निफ्टी में ज़्यादा मूवमेंट. होता है वही खड़ा है बिल्कुल साइलेंट. का कोई अग्रेशन
Kotak trade has been made into a loss-free one. Yeah, I'm more comfortable. देखते हैं क्या कुछ होता है. बस as of now small move trying to come in Bank Nifty की वजह से on the Kotak trade with stop loss pushed up to 60 rupees 50 paise on the option. You are facing issue कि if the voice is not clear, I will change my mic from tomorrow. Okay, I'll change my mic from tomorrow. तो आपको भी कंफर्टेबल मिल जाएगा. वॉइस में प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए. Important. Definitely, I will try to change my mic from tomorrow. Sridhar sir has already booked 50,000 profits and Uday sir is on Nifty. बैंक निफ्टी फ्लैटिश हो चुका था इसीलिए ज़्यादा कुछ वहाँ पे नहीं मिला. कोटक फिलहाल के लिए चल रहा है, देखते हैं. कोटक में मिलने की प्रोबेबिलिटी है या कहीं नहीं, वो अभी तो आ जाएगा. These traders, I believe everyone are part of the Telegram channel. If not, you can join the Telegram channel because after this live stream completes, any afternoon live market updates I'll be sharing on the Telegram channel only. This is why I'm telling you can join on the Telegram channel also. If you have not joined, still please right back up. Okay. See, बताइए sir, any other questions, queries, ask in the chat box. Yes, tomorrow same time, sir. Tomorrow morning, same time, I'll be joining the live market session. We all the market trading session will be starting the live session only on the morning. Afternoon the session रहेगा. All the sessions are on the morning as of now. But few traders have suggested an option of doing 2 hours morning and 2 hours of afternoon session. Let me rethink on it. As per the time availability, if possible, I will do that case also. But देखते हैं as per time is available to do it. Okay. Definitely सर वेट करोगे तो रिवॉर्ड बिल्कुल भी मिलेगा. Obvious. I'm telling from my experience. I have experienced many times. इसीलिए बता रहा हूँ. AI and what is happening. This in bank is the culprit. This bank is the culprit. Two more minutes. Let's understand. Let's see what Kotak is doing. See, उसके बाद we'll plan accordingly. थोड़ा सा ओवरलैप ही कर रहा है. ओवरलैपिंग अराउंड द मॉर्निंग आई को ब्रीच नहीं कर रहा है कोटक.
The way Kotak is staying very silent here, the down move which is trying to come, volume नहीं आ रहा है. देखना पड़ेगा कि उसके हिसाब से buyers whether they will take advantage of it and try to take control of the price. Because Kotak one bank is way far enough to move the entire banking stocks. The momentum is coming on the Kotak Bank. Kotak Bank में momentum मिल रहा है तो बाकी तो आराम से स्टॉक्स बाकी बैंकिंग स्टॉक्स शूट अप करने में बहुत देर नहीं लगेगा. एक बार एक्सिस बैंक को चेक करेंगे कि एक्सिस बैंक में असली में क्या हो रहा है. यहाँ पे खड़ा है एक्सिस बैंक आराम से without any